You are doing what Jung called separating the ego from instinctive reaction. You are no longer automated by old memories. You begin to have space to choose. Imagine you are walking on a narrow bridge. If you run, you see nothing except the fear of falling. But when you walk slowly, you begin to see the scenery, the color of the sky, the light on the water. Slowing down does not make you weak. Slowing down makes you awake. And that awakening is the true source of strength. There is a passage in the Bible saying that Jesus often withdrew to lonely places to pray. Many think of it as separation, but on a deeper level, it is slowing down. Even the one considered to be full of power needed moments of stillness to return to his essence before bringing his light into the world. A soul that does not know how to slow down cannot bring any clarity into life. When you learn this habit, life ceases to be a race. It becomes an encounter with yourself. You are no longer pulled by others' speed, by society's expectations, by the world's noise. You walk with your own rhythm, slow, deep, intentional, and that rhythm makes you different. People sense your peace before you even speak. They hear steadiness in the way you breathe, the way you look, the way you choose. Because slowing down is not just a behavior, it is an energy. One day, you will realize that all the decisions that changed your life, leaving a toxic place, choosing a kind person, saying no to an unsuitable opportunity, forgiving someone, or forgiving yourself, came from moments when you slowed down. Not from panic, not from urgency, but from the clarity of a conscious mind. And if you are going through a phase where everything inside you urges you to go faster, consider this a reminder. That is not your soul speaking. That is the wound speaking. The soul can only speak when you are slow enough. So we have passed over half the journey, and I am truly grateful for your meaningful presence. Before continuing, pause for a breath, inhale deeply, and listen to your own heart. If these words resonate with you, if you see glimpses of yourself in these reflections, try writing one word in the comments: slow. Sometimes, a single gentle reminder is enough to plant a seed of change in your mind, and who knows, it might become a small light, helping someone lost find their way back to themselves. Number 9. The habit of letting go of control. Surrender to the self. Once you have learned how to slow down, you will notice something subtle that Jung always emphasized. The stiller you become, the more clearly you see how much you have been trying to control your life. There will likely be a moment in your life when you ask yourself, what in this life is truly in my hands, and what has never belonged to me? Jung believed this is the turning point because the moment you begin healing on the inside, the ego, which is used to controlling everything to feel safe, will start to panic. It wants certainty, wants to know the outcome, wants to hold the future in its hands. But it is at that exact moment that the journey of growth touches upon a habit Jung considered the core of transformation. Learning how to let go. Not letting go of everything, but letting go of the control that has been tightening around your soul. An image that always appears most clearly when speaking about this habit is the image of a river. Many people swim against the current, try to cling to branches, try to fight against the natural flow of life simply because they believe, if they do not control things, everything will collapse. But Jung's river is different. It does not sweep you away blindly. It is the flow of the unconscious,
of intuition, of synchronicities, the subtle signals sent by the self. When you let go, you are not carried away aimlessly. You are guided. Just like the lyric in the song, "Let It Be" by the Beatles. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. Letting go is not giving up, but agreeing to let the answer appear at its right time. I once heard a story about a man working in business who spent 3 consecutive years desperately trying to salvage a project he believed must succeed. He did everything, calculated, pushed himself, chased every small opportunity, stayed up many nights worrying. He controlled every tiny detail, from clients, partners, to employees. But the more he tried, the more chaotic everything became. One day, after a major argument with his associate, he sat alone in a cafe and realized he had not listened to himself for a long time. He had only listened to fear. Fear of failure, fear of losing reputation, fear of others thinking he was not good enough. That day, he did something that surprised even himself. He let go of the project, not quitting his career, but letting go of the expectation that it must succeed right now. During the next 3 months, he spent time with himself, walking every morning, sitting silently for 20 minutes a day, writing down what he truly wanted. He said, "For the first time in many years, I felt like I was no longer fighting with life." 6 months later, he met a new business partner. Not by actively searching, but through a completely unexpected encounter. That new project not only succeeded, but also went in the exact direction he had wanted from the beginning. He ended the story with a very Jung-like sentence. "When I let go, I did not lose. I reclaimed myself." From a neuroscience perspective, the ability to let go of control is directly linked to the prefrontal cortex, the region that manages higher-order thinking. When you try to control everything, the amygdala, the fear center, becomes overactive, causing stress, increased heart rate, and a mind stuck in defensive mode. But when you let go, the parasympathetic nervous system activates, helping reduce cortisol and unlocking clear thinking. Letting go does not make you weaker. It makes your brain clearer, your soul lighter, and your intuition stronger. Letting go, according to Jung, is also an act of trust, not blind trust in the universe will take care of it, but trust that the deepest part of you knows the way. The self does not lead you to places that shrink you. It only leads you where your soul is ready to grow. The ego always wants to climb the highest mountain. The self wants you to stand on the mountain that truly belongs to you. If you notice the most beautiful moments in life, a love arriving at the right time, an opportunity opening up, an unexpected encounter that changes your direction, have never come from forcing. They arrive when you stop clinging, stop demanding, and your heart is calm enough to recognize what is calling you. Jung once said, "We meet ourselves time and again in 1,000 disguises on the path of life. When you let go, you meet yourself again, in a new form, brighter, freer." Letting go of control also helps release the heavy expectations placed on others. Many people suffer because they want others to love them the way they desire, respond the way they hope, heal at the pace they set. But love does not bloom when you control it. It blooms when you let others be themselves. Like planting a tree, you cannot pull it to make it grow faster. You can only tend the soil, water it, and give it time.
The self understands this. The ego does not. An image I always use to describe letting go is a hand tightly gripping a handful of sand. The tighter you squeeze, the more sand slips out. But when you open your hand, the sand stays still. Letting go is when you keep your palm open, not trying to hold, not trying to chase. You allow everything to come and go in its natural rhythm. Sometimes, letting go means accepting that the person you love does not choose you. Sometimes, letting go means allowing a plan to fail because it no longer aligns with who you are. Sometimes, letting go means no longer trying to fix others. Sometimes, letting go means saying, "I do not know what will happen, but I trust I will get through it." And what Jung wants you to understand is this: letting go does not make you lose. Letting go brings you back to the self. You no longer cling anxiously to the future. You return to the present. You no longer fear losing. You realize you were never lacking. You no longer live like someone who is avoiding. You live like someone who is opening. Life rarely operates according to the ego's plan, but it always operates with order when aligned with the self. When you let go, you not only reduce suffering, you begin living true to your nature. The person of inner depth Jung described is not someone who controls a lot, but someone who knows how to step back, listen, wait, and trust. They do not force the river, they read it. If you are going through a phase where nothing seems to go according to plan, consider it not a failure, but life's invitation for you to practice this habit, the habit of letting go in the true Jungian spirit. Not letting go of dreams, but letting go of the way you are desperately trying to hold them. Not letting go of hope, but letting go of the fear making you shrink. Ask yourself, if I stop trying to control this, what will become lighter inside me? The answer may arrive in silence, on a peaceful morning, or in a moment when you unexpectedly exhale. But it will come, because the self always speaks. The question is whether you are still enough to hear it. And if you are trembling as you let go, that is completely normal. The ego fears letting go because it believes that if it releases its grip, the reality is, everything most will digital fall ads apart. never get a chance. But with the Axon, truth Kobe is, was connected to over you are 1 not dropping billion potential yourself customers into inside emptiness. mobile games. We're watching You are Kobe's dropping ads was the yourself only into way a to keep deeper playing the game. layer of wisdom, where the self has been waiting for you for a very long time. And when you practice this habit every day, you will see that life not only becomes lighter, but you also become the clearest, calmest, and freest version of yourself. Number 10. The habit of turning fear into action, shadow into action. And exactly when you have learned how to let go, learned how to stand steady in the inner stillness as in the previous part, you will step into a transformative habit that Jung always considered the boundary between understanding yourself and becoming yourself, turning fear into action. If letting go brings you back to a slower and deeper rhythm of living, then action is where you let your soul step out into the world. Because Jung believed that knowledge without action is still just a beautiful shell of intellect. But only action changes the structure of the unconscious. Only action moves your life in a new direction. What many people do not realize is that fear is not a sign of weakness. It is simply energy that has not been directed. When you are afraid, the energy inside you rises. But if you do not channel it into action, it becomes procrastination, self-doubt, or nameless anxiety. But when you act, even a very small step, that energy transforms, clears a path,
and changes the way your brain perceives you. Action is the strongest message you send to the unconscious. I am taking responsibility for my life. I once heard a very interesting story from a psychologist in Vienna about a student named Leo who had a strangely clear dream: to become a documentary filmmaker. He wanted to tell real human stories, but throughout 4 years of college, he could not shoot a single video longer than 3 minutes. Not because he lacked skill, not because he lacked time, but because every time he began, he was blocked by a thought. Who will watch this? What if someone criticizes it? He did not realize that those questions were the real barrier, not his ability. One day, his professor said, "If you are afraid to start a film, then make the worst film you possibly can." Leo laughed, but those words hit exactly the right spot. His fear was not about making a film, but about the pressure to make it good. The next day, he picked up his camera and recorded a short story about a flower seller on the street corner. No professional lighting, no beautiful angles, no script. Just capturing a real moment. When he finished editing the 3-minute clip, he realized something strange. He was no longer afraid. Not because the film was perfect, but because he had crossed the boundary that had kept him stuck. A year later, Leo had his first documentary screened at a small film festival. He said the thing that changed his life was not the award or recognition, but the moment he pressed record on that first day. When his hands trembled, his heart pounded, but he kept going. "I realized," he said, "that fear never disappears before action. It only disappears in action." What keeps many people stuck is not fear, but waiting for fear to go away. But Jung always emphasized that emotion is not the only signal governing life. He believed that action has the power to reshape emotion, not the other way around. You do not wait to feel confident before doing. You do it to become confident. You do not wait for doubt to vanish before starting. You start so the unconscious learns that doubt no longer has power over you. Imagine the image of a mountain you want to climb. You stand looking from the bottom, and it seems overwhelmingly tall. But when you take the first few steps, the scenery changes. The slope no longer looks like what you imagined. And when you have climbed a small section, you look back and realize an important truth. The scariest part was standing still. Turning fear into action is not reckless action, it is conscious action. It is the moment you tell yourself, "I will do this, even though my heart is racing," not to pretend to be brave, but to live true to your inner truth. It is when you take a step that is imperfect but honest, a step enough to remind you that the trembling of your body is never stronger than the calling of your soul. And in those moments, you no longer live according to the anxious warnings of the ego, but begin to act according to the self, the deepest, calmest, and most lucid center within every human being. Jung believed that humans only truly mature when they act from the self. You cannot wait until anxiety disappears before you live. You mature in the very moment you carry anxiety with you and still move forward. The important thing in this habit is not to change your entire life in one day. The important thing is the small step with great meaning. You do not need to write an entire book. You only need to write one page, the first page,
the page that shifts your life. You do not need to wait until you feel fully confident. You only need to send one email you have postponed for months out of fear of rejection. You do not need a perfect workout session. You only need 10 minutes to remind your body that you are still caring for it. You do not need to be strong in every relationship. Sometimes, making one phone call to face something instead of running away is already a major victory. I have a friend who once told me that her first run in life lasted only 3 minutes. 3 minutes so short that others might consider it insignificant. But for her, it was the moment her life changed direction. Because those 3 minutes were the first time she chose action instead of waiting, chose to step beyond the limits fear had built for years. The following year, she completed her first marathon. It was not the marathon that made her strong. It was those first 3 minutes, the 3 minutes she dared to begin, that changed her. Jung once said, "You are what you do, not what you say you'll do." This is one of the quotes that best reflects the spirit of this habit. You do not become the person you wish you could become, but the person you choose to act as in every moment. And no action is too small to matter, especially when that action is taken while you are still afraid. You cannot wait for fear to vanish before acting, because fear only dissolves while you are moving. When you begin to act, something strange always happens. Things you thought were impossible suddenly feel lighter. The limits you believed belonged to you turn out to be nothing more than products of the past. And the future opens doors you never dared to imagine. If today you feel you are standing before something that makes your heart beat faster than usual, do not wait another year, another month, or even another perfect day. Perfection is not what opens the door to your life. It is the trembling step that opens that door. Just one small step. The small step that one day you will look back on and realize, that was the moment everything began to change. Number 11. The habit of choosing an energetically aligned environment. The habit of energetic environment. What very few people realize on the journey of self-transformation is this. You are not always stuck because you lack discipline, courage, or knowledge. Often you are stuck simply because you are standing inside an energy field that does not belong to you. Carl Jung believed that humans are not only influenced by their personal unconscious, but also fused with the collective unconscious. This means the energy of the people around you affects your mind, your choices, and your pace of life far more than you think. In the wrong environment, the self is suffocated. In the right environment, the self is liberated. Not every sentence or every relationship is harmless. Some people make you open and some make you shrink. Some places expand your mind and some make your thoughts contract. And to change your life, you do not always need to try harder. Sometimes, you simply need to stand in a place where your soul can breathe. I once met a girl named Miriam in a small training class in Barcelona. She shared that for 3 years, she always felt not good enough, not skilled enough, even though everyone could see she was creative, sensitive, and intelligent. But in her friend group, people who lived in competition, comparison, and constant belittling, she was always the one they underestimated. Every time she wanted to start a business, they said, "No one cares about that idea." Every time she wanted to travel, they asked, "What are you trying to prove?" Every time she dressed better, they said, "Trying too hard?" For 3 years, Miriam thought she was weak.
Only until one day, she moved cities. Not because she was too hurt, but because her heart could no longer endure the old environment. In the new city, she worked with people who were creative, relaxed, funny, and communicated in an open language, not the language of defensiveness and competition. 6 months later, Miriam created a small fashion brand. A year later, she opened her first store. When I asked, "What changed?" she replied, "Not me, the environment. I simply bloomed when I stood in the right place." Jung believed that we do not only absorb energy, but we synchronize energy according to the frequency of the group. Humans do not live separately. They merge into the emotional atmosphere of those around them. If you live among people who only complain, you will gradually become pessimistic. If you are among people who talk only about shallow things, your mind will become dull. If you live among people who fear change, you will shrink. But if you stand near people with clear frequencies, those who live with purpose, courage, and peace, your mind will reflect that. You become deeper without effort, more peaceful without struggle, more expansive without forcing yourself. Imagine you are a candle. If you place a candle in a suffocating room with little oxygen, the flame weakens and flickers, not because it cannot burn brightly, but because the environment deprives it of air. But if you place that same candle in a spacious room with gentle wind, tranquility, and natural light, the flame not only shines, but burns steadily and beautifully. Humans are the same. The inner light does not disappear. The environment simply decides whether you can sustain it. History holds countless examples showing how environment determines a person's breakthrough speed. Steve Jobs once said that if he had not lived in the creative, rebellious environment of California in the 70s, Apple would not exist as it does today. Similarly, J.K. Rowling wrote the first chapters of Harry Potter at the Elephant House Cafe, where she said the energy of the space made her imagination flow more naturally than anywhere else. Adele once shared that the period she blossomed the most was when she left toxic relationships and found a group of artists who shared her creative frequency. And from that, her most iconic albums were born. Success does not happen in random environments. It blooms where the right energy nourishes you. Carl Jung once said, "Every person has a psychic community, soul companions whose frequencies match yours, whom you may not know in real life, but instantly feel you belong to when you meet them. They do not need to try to understand you. Their presence alone changes your energy. Such people do not lift you through advice, but through their frequency of living. You feel brighter near them. You become more honest, more courageous, more creative. You become the most natural version of yourself without trying. Jung called such people containers of the psyche, safe vessels for the mind. Simply standing next to them, you feel yourself open. But the painful truth is, most people spend their entire lives in environments that do not belong to them, jobs that shrink them, friendships that make them self-doubt,
families that silence their voice, and they think the problem lies within themselves. But the problem is, they are standing in the wrong place. If you feel empty, exhausted, or like you're losing yourself, do not immediately blame yourself. Ask, does this environment allow my soul to exist? If the answer is no, be honest. You are not weak. You are simply in a place not meant for you. And if you have ever stepped out of a mismatched environment, you know how powerful that feeling is. As if your breath suddenly expands. As if you reclaim parts of yourself you lost. As if the sky opens a patch of light you had never seen before. Jung believed such moments are not coincidences. They are signs that the self is awakening. He once said, "The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances. If there is any reaction, both are transformed." On the deepest level, Jung was not only talking about relationships between two individuals, but about the frequency between you and your environment, that the human soul can only grow in spaces capable of touching, transforming, and awakening the forgotten parts within you. You cannot bloom in the desert of people who judge, compare, and control. You bloom when you stand among people who give you space, who do not rush to judge, who do not crush your vulnerability. You bloom when you stand among people who make you want to be more honest, better, more creative, not to prove anything, but to respond to their frequency. And the truth is, changing your environment is sometimes the bravest act you can do for your soul. Not because you are selfish, but because you are finally clear enough to see that where you are standing no longer helps you become yourself. If today you feel you are in the wrong frequency, the wrong group of people, wrong space, wrong rhythm, see it not as a mistake. See it as an invitation. Ask gently, where can I breathe? Who helps me open? What makes me shine? When you find the frequency that aligns with your soul, you will no longer have to struggle to grow. You will simply become yourself. And that, according to Jung, is the deepest form of transformation. And what about you? Before we move on to the next habit, I want to ask you one simple question, capable of shaking your entire journey. If your soul could freely choose the place to bloom, what would that place look like? Write it in the comments. A place, a person, a frequency, a space. Anything that feels like the right place for you. You never know how that small answer might open something inside you, and maybe awaken something in someone reading your comment. Number 12. The story of Clara and the room where energy was suffocated. And from the truth that the environment can open you or shrink you, as we touched on in the previous part, you will understand a lesson Jung always saw as the greatest blind spot in healing. The problem is not always you. Sometimes the stagnation you feel, the unexplained exhaustion, the persistent self-doubt, do not originate from your true nature, but from a collective unconscious field that is too impoverished, too heavy, and too mismatched with your soul's frequency. According to Jung, humans do not only live in a physical house, they live in a psychological atmosphere, and that atmosphere can nourish you or suffocate you to the point you no longer recognize yourself. Clara, 28, was one of the souls suffocated this way. And her story is something many people will see themselves in. Clara grew up in a family where every form of growth was considered unnecessary, every desire to learn mocked, every attempt to become deeper dismissed as nonsense.
When she read psychology books, her mother said, "There you go again, making things up." When she wanted to take a creative course, her father said, "Focus on making money." When she changed her style to feel more confident, her sister scoffed, "Stop being fake." These comments did not just make her sad for a moment. They seeped into her unconscious, becoming energy codes that made her doubt every step she took. Her soul wanted to open, but the energy field around her tightened. Every time she wanted to start something new, a voice that wasn't hers whispered, "Who do you think you are?" Every time she wanted to step out of her comfort zone, another voice murmured, "You'll fail anyway." And the heartbreaking part is that Clara believed these voices were her own, when in fact, they were echoes from people who never dared to step out of their own fear. She thought these were her own thoughts. But in truth, they were the collective shadow of her family. A shadow filled with doubt, limitation, fear of change, and the deep belief that trying is pointless. Standing inside that atmosphere too long made Clara think she was weak, lazy, undisciplined, and lacking ambition. But the truth was, she was simply standing on soil where flowers could not bloom. Jung once wrote, "The greatest burden a child must bear is the unlived life of the parents." And Clara carried not only her family's expectations, but the fears they never faced. Everything changed on a completely ordinary night, an argument over doing the dishes. But what Clara got angry about was not the dishes. She got angry because she suddenly realized that despite being 28 years old, she was still treated like a child without a voice, without the right to dream, without space to open. That night, she packed her things, called 2 college friends, and moved in with them temporarily. The new apartment was not luxurious. A small living room, a kitchen scented with tea, a balcony full of plants Matteo watered every morning, and strings of warm yellow lights Sophie hung in the living room. But Clara felt it the moment she stepped in. The air was different, wider, softer, brighter, as if her soul had been given a door it had never known existed. And for the first time, she did not have to shrink herself to fit the world around her. Matteo and Sophie were not exceptionally successful, brilliant, or wealthy. They were simply people living with openness. They read not to appear intelligent, practiced yoga not for social media, talked about dreams not to compete, but to uplift each other. No one told Clara she was too dreamy. No one mocked her when she talked about a job she wanted to apply for. No one told her to calm down when she wanted to improve herself. On her first day in that apartment, Clara cried without knowing why. But deep inside, she knew. For the first time in years, she could breathe without feeling someone crushing that breath from behind. It was the moment the unconscious began to self-regulate, when the soul finally touched a kind of light it had been deprived of for too long. A week later, she applied for the job she once feared to try. A month later, she jogged every morning with Matteo, listening to Sophie talk about her new art project. 3 months later, Clara noticed her mind becoming clearer, the heaviness disappearing, inspiration returning, and her work performance doubling. She slept deeper, laughed more, snapped less, as if someone were adjusting the frequency of her soul back into alignment. Jung once said, "The psyche grows where it is mirrored with acceptance. The soul grows only in places where it is mirrored with acceptance." And that was what Clara received in that apartment. Not help, but a mirror of authentic souls. They did not heal her with advice.
They healed her through presence aligned with the right frequency. One evening, as the three of them drank tea on the balcony, Clara said a sentence that remains one of the most important realizations of the inner growth journey. "It's not that I was weak, it's that the energy around me was too impoverished." One sentence, yet it contains the entire essence of the collective unconscious. We do not only breathe oxygen from the air, we breathe energy from the unconscious of the environment. And the right frequency environment can heal you faster than any therapy. From Jung's perspective, when Clara left her parents' house, she did not simply move out. She left a collective shadow that had enveloped her since childhood, a heavy, energetic fog preventing her from seeing herself clearly. And when that collective shadow loosened, the self, the mature essence, began to emerge. Jung once wrote, "No tree can grow to heaven unless its roots reach down to hell." And sometimes, hell is not the pain you experienced, but the environment you lived in for so long that you mistook it for normal. After 6 months, Clara moved into her own apartment, a small but bright space, filled with her paintings, her plants, and the light she had never previously allowed herself. She said, "I didn't find myself. I simply stood in the place where I could grow." And that is the truth most of us understand only after leaving the place that once suffocated us. If you feel yourself shrinking, exhausted for no reason, losing inspiration, losing trust, losing light, do not rush to believe it is your fault. Do not think you lack discipline, courage, or motivation. Perhaps you are simply like Clara, standing in a room that is suffocating your energy. Ask a gentle but profound question. Does this place allow my soul to breathe? If the answer is no, you do not have to keep fighting. You simply need to step out. Because the right frequency environment does not require you to strain to grow, it allows you to grow naturally, like a seed finding the right soil. And when you stand in the place that truly belongs to you, as Jung said, the soul will know the way back to the light. Number 13. The habit of reauthoring your inner narrative. Reauthoring narrative. Have you ever wondered why, even though you have changed many habits in your life, there is still one thing that keeps you stuck, as if an invisible hand pulls you back to the past every time you try to step forward? It is precisely at the moment you begin to realize that your old habits no longer fit that you move closer to one of the most transformative habits in Carl Jung's philosophy, the habit of rewriting your own inner story. Because in the end, you do not live according to the life you have. You live according to the story you tell about that life. And when the story changes, the unconscious changes. And when the unconscious changes, destiny shifts. Carl Jung once wrote, "I am not what happened to me. I am what I choose to become." A sentence that appears simple, yet contains a profound psychological principle. You are not defined by memories, but by the way you retell those memories in the present. Your life is not written by events, but by the meaning you assign to them. And if the meaning changes, the story changes. If the story changes, the future will be rewritten. A friend of mine was 34 years old, but always believed she was not good at anything. She said that as a child, every time she made a mistake on her homework, her mother would sigh and say, "Why are you so slow? All your friends can do this already." And so for 20 years, she carried that story, the story of inadequacy, of not being worthy of anything good.
When she applied for jobs, she always said, "I know for sure they won't choose me." When she fell in love, she whispered to her friends, "I'm sure he'll leave me eventually." Not because reality said so, but because her inner story had already written the ending. One day, in a therapy session, the therapist asked her, "Are you sure this is your story? Or is it the story of a child who once needed to be loved, but never heard any words of affirmation?" That question made her stay silent for a long time. Then, for the first time, she tried to rewrite her own story. "I am not inadequate. I was simply a child who was not seen in the right way." A few months later, she said, "With just one new story, my whole life changed." She applied for a new position and got accepted. She ended a painful relationship and stepped into a kinder love. All because she no longer lived as the helpless character in her old tale. She became the author of her new story. Rewriting your inner narrative is, in essence, the most fundamental Jungian awakening step. Because the unconscious is governed by symbols and stories. When you change your story, you are changing the symbolic system the unconscious uses to guide you. If in the old story you are the weak one, the unconscious will lead you into situations that prove that. If in the new story you are the one growing, the unconscious will send experiences that help you expand. That is why many people change their environment, but their fate remains the same, because their inner story has not changed. In Greek mythology, there is the story of Theseus entering the labyrinth to face the Minotaur, the half-man, half-bull creature representing the shadow in each person. People often remember only that he killed the Minotaur. But the most important part of the story is not the victory, but the red thread Ariadne gave him. The red thread did not make him stronger, did not make him faster, but it kept him from getting lost. It allowed him to rewrite his journey from within the labyrinth instead of being controlled by it. And that is exactly what the habit of rewriting your inner narrative gives you. A thread to walk out of the maze of old memories, distorted beliefs, and the stories someone else accidentally or intentionally wrote for you. No one lives without being wounded, but the wound is not what determines who you are. The story you tell about that wound is what determines it. The one who says, "I failed," will live like a failure. The one who says, "I am learning," will live like someone who is growing. The one who says, "I was abandoned," will shrink in fear. The one who says, "I am free to start again," will step forward with courage. The same event, but two different destinies, all depending on the story. Modern psychology calls this skill narrative reframing. But Jung looked deeper. He believed that rewriting the story is how humans converse with the unconscious. When you rewrite a painful memory, you are not denying it. You are giving it a new meaning so that it no longer controls you from the dark. Try looking back at your life. Is there a story you have told yourself so many times that it has become your identity? The story of family pain, the story of a broken relationship, the story of poverty, the story of being treated unfairly, the story of things you cannot change. Those stories may once have been your truth, but they do not need to be the truth of your future. Every day you have the right to rewrite, not to deceive yourself, but to free yourself from an old role. Some people ask, but what if that story once hurt me deeply? The answer is, rewriting the story is not to deny the pain, but to give the pain a new purpose, so that it no longer becomes a burden,
but becomes a lantern guiding your way. Like the image of a candle burning in the night, the light does not erase the darkness, but makes the darkness less frightening. Imagine your life as an open book. You cannot fix the pages already written, but you can decide how to write the next chapters. A character may begin in despair, but that does not mean they must end in hopelessness. No tragedy forces you to repeat it, unless you continue to tell that tragic story every day. You can choose to rewrite the old narrative. I was not loved into I am learning to love myself. I am always rejected into I am finding the place that truly fits me. I failed into I tried and I will try again. When the sentences you tell yourself change, the energy inside you changes. When energy changes, behavior changes. When behavior changes, reality changes. The most miraculous part is, you do not need to immediately believe the new story. You only need to repeat it enough times for the unconscious to begin believing. And when the unconscious believes, the world reflects it. Rewriting your story is also how you reclaim the power you once gave others, the power to define who you are. Because throughout childhood, you lived in stories others wrote, parents, teachers, society. But at some point, you must hold the pen yourself. You must ask, does this story still fit me? If not, you have the right to change it, whether others like it or not. Everything begins with the story you tell yourself tonight. And if you are at a stage where you feel you need a new page, consider this section a reminder that you can rewrite it. No one can do it for you, but no one can stop you either. The future is not something you wait for. It is something you are writing right now. Number 14. The habit of connecting with the self, living from the self. There is a deeper layer of the transformation journey, a layer Carl Jung considered the final convergence point of all inner paths, connecting with the self. If the previous habits helped you shed illusions, overcome fears, stand firm in solitude, and no longer be shaken by the reactions of the world, then this habit is the place where you return to your deepest root, where you are no longer pulled by external forces, no longer driven by momentary emotions, no longer lost in echoes of the past. This is where your soul becomes clear, steady, and unmoving like a mountain. Jung once wrote, "The self is our life's goal, for it is the completest expression of that fateful combination we call individuality." When you live from the self, you no longer search for life. Life aligns itself around you. Connecting with the self is not a technique, nor is it a mystical moment of enlightenment, as many imagine. It is a daily habit, a way of living, where you return to your deepest center, like a sailor who always looks to the North Star to keep his direction, no matter how turbulent the waves become. When you touch the self, you step into the flow of what is right, not right by social morality, but right by the soul, right by the frequency the universe wove specifically for you. There was a woman I once met in a 7-day meditation retreat. She had a stable job, a stable family, even a life that anyone looking from the outside would consider complete. But inside, she always felt as if she was living someone else's life. Every morning she woke up feeling like she was about to step into a role. When I asked what made her join the retreat, she said, "I don't know who I am anymore. I know I'm capable. I know I'm hard-working, but I'm not sure if that's me or just a habit to please others." On the 3rd day of the retreat, usually the day when the mind begins to resist, she cried when the meditation teacher asked,
If there were no roles, no expectations, no one watching you, who are you? That question shattered the shell she had carried for decades. After the retreat, she did not immediately change her job or relationships, but she changed her way of living. She spent 10 minutes every morning reconnecting with herself before touching the world. And she said, "I realized I had never truly lived before. I was only reacting." That is the essence of the self, not to react, but to be present. The self is like a deep lake. The surface is emotions, thoughts, daily fluctuations, reactions, fears, societal expectations, and the stories others place upon you. But the deeper you go, the more still the water becomes, the clearer it is, untouched by the wind. When you learn to live from that deeper layer, you are no longer pulled by the winds on the surface. You become the observer, not the one swept away by small waves of emotion. Jung believed that the self is not something you have to create, but something you must remove the dust to see. Like the sculptor Michelangelo, who said he did not carve statues, he merely removed the excess to release the form already within. Connecting with the self is the same. You do not become someone else. You simply return to the person you have always been. One of my favorite stories about touching the self is the story of a Japanese Zen master. Once, a student asked, "Master, how do I find my path?" The Zen master did not answer. He simply took the student into the forest. He broke off a branch and threw it to the ground. The branch fell in a certain direction. He said, "The branch falls that way, not because it thinks, but because it follows its nature. Humans are the same. When you stop trying to become someone, you will see yourself fall into the right direction." The story seems simple, but it contains what Jung spent his entire life studying. When you live from the self, your actions become as natural as the falling branch. No forcing, no comparison, no fear of being wrong. Only the natural rightness. Connecting with the self every day is not a complex ritual. No need for deep meditation, no need to escape to the mountains, no need to change your whole life. Sometimes it begins with very small things. Sitting still for 5 minutes without touching your phone, writing down a truthful thought without self-editing, walking slowly without chasing the noise of the world, pausing for a few seconds before reacting, taking a deep breath before making a difficult decision. Each of those moments is like a bridge leading you back to your own center. The self is not a static state, it is a relationship. The more you connect with it each day, the more it guides you in the right direction. And when you live from the self, life cannot go wrong, because the direction does not come from others, but from your soul. Jung once wrote, "The self is not only the center, but also the whole circumference which embraces both conscious and unconscious." The self is not only the center, it is the circle that encompasses your entire being, even the parts you have never touched. When you live from the self, you no longer fear your own darkness, because you understand that darkness also belongs to that circle. You no longer fear judgment, because your worth does not come from the outside. You no longer fear being wrong, because every step has meaning in the journey of return. Imagine the self as a flame inside a lantern. If the lantern is dusty, the light dims. If it is covered by cloth, the light cannot pass through. But when you clean each layer of persona, each layer of shadow's fear, each layer of old wounds,
That light shines brightly, not because you turned it on, but because it was always there, just covered for too long. If today you feel lost, confused, or unsure of what is right, understand that you are not broken, not weak, not failing. You have simply been too far from your center. Come back. Sit down. Breathe. Write. Look inward instead of outward. The self never disappears. It only waits for you to return. And when you live from the self, truly live, life begins to revolve in a new order. Every decision becomes clearer. Every relationship becomes less tangled. Every action gains weight. Because you no longer fit yourself into a mold. You become the mold. When you look back at the entire journey that the 12 habits from the Carl Jung will completely transform your life has taken you through, from identifying the deepest unconscious layers, to rebuilding inner order, to opening habits that can transform your entire psychological life, you will realize you are no longer the person who began this video. Each habit Jung left is not just an action. They are architectural pieces, quietly reconstructing your soul, silently but steadily, until one day you realize you are standing at a completely different level of awareness. You will see that transformation does not arrive in the moments you feel strong, but in the moments you feel weak and still continue. Jung wanted you to remember that strength already lives within you. You do not need to chase change. You are where change begins. You do not need to wait for the world to see you. Your presence itself makes the world respond. And when you live as someone awakened, someone who knows who they are, knows what their soul needs, acts from a center that cannot be shaken, you no longer seek success as a reward. You become the cause. Success becomes the natural consequence. If this video awakened something in you, an Sì, Poliaci, ନାଲିଟେ ଲଗେଇଛି ମୁନୁ ମୁନୁ ମୋର ମୁଡି ବୁଢୀ ଓହୋ ନାଲି ରିବନଟେ ଲଗେଇଛି ରେ ମା ଓହୋ ଫ୍ରକଟେ ବି ପିନ୍ଧିଛି ଫୁଲୁ ଫୁଲୁ ହେଇଛି ହଁ ହଁ ଓହୋ 7 months birthday ହେଇଗଲା 7 months birthday ହେଇଗଲା ବିଟୁ ଓହୋ ଓହୋ ହଁ 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 ଓହୋ ଓ ମା ଓ ବୁଢୀ ଓରେ ବୁଢୀ ଓରେ ମୁଲୁ ମୁଲୁ
Bulu, bulu, bulu mata. Ha ha. Rok ପିନ୍ଧିଛୁ ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ବେଟା ଓହୋ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଫ୍ରକ୍ ଟେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ଓ ମାଉଟା ଆଉ 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 ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଫ୍ରକ୍ ଟେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା ରେ ବୁଆ ଓହୋ ଓହୋ ଆଉ ଆଉ କଣ୍ଢେଇ କଣ୍ଢେଇ ପୁତିଲି 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 କଣ୍ଢେଇ କଣ୍ଢେଇ ଓ ଏଇଟା କଣ ଫଙ୍କି ପେଟୁଟେ ପିନ୍ଧିଛୁ କି ହଁ ଆ ଆ ଆଉ କଣ ହେଲା ହଁ ଭଲ ପେଟୁଟେ ବେଟା ଧମକି ନାହିଁ ଭଲ ଭଲ ହଉ ଉଁ, ହଉ କୁଆଡେ ଗଲା ମୁହଁଟା ତୋର ହେତି ହେତି ଓ ଓ କଣ ହେଲା ବିଟୁ ଏ, ଏ, ଓ, ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛ କି ବୁଲିବାକୁ ସେଟା ବଦ ହଉଥିଲା ସେଟା ବଦ ହେଇଯାଉଥିଲା ବେଟା ହୁଁ ହଁ ହଁ ମା ହଁ ହୁଁ,
an awareness, a memory, a frequency you had forgotten. Share it with someone who is walking through dark places as you once did. And if you want to continue this journey, the journey back to the self, back to inner order, back to the person you have always been capable of becoming, subscribe so you don't miss the next videos. Each video step toward your breakthrough. And know that no test is given without the grace to overcome it. Unusual synchronicities will begin to appear. Signs and symbols will align in ways too perfect to be coincidence. A word spoken by a stranger, a dream that stirs your heart, a repeated message appearing in unexpected places. All of these are whispers from the divine, assuring you that you are on the right path. Pay attention, for the universe speaks in a language of signs. A deep peace will settle over you, even in uncertainty, even when nothing in the external world confirms what you feel inside. You will experience a quiet confidence. This peace is the ultimate sign that what is meant for you is already unfolding. It is not based on circumstances, but on an unshakable trust that God is at work. And then, just when you least expect it, the breakthrough will come. It will not come through force, nor through struggle, but as a natural unfolding of what was always meant to be. When you are aligned with divine will, nothing can stand in the way of what is destined for you. There is a divine orchestration that cannot be rushed, a timing that is beyond human understanding. When God is about to bless you with something beyond your imagination, He first prepares you to receive it. He does not place something grand into hands that are not yet ready to hold it. So He begins His work in the quiet places of your heart, shifting your thoughts, breaking your old limitations, and awakening a new consciousness within you. You may find yourself questioning everything you once believed. The old ways of thinking no longer satisfy you. The things you once chased after seem unimportant. A hunger for something more begins to grow within you, and though you may not know exactly what it is, you cannot ignore the pull. This is the divine call to expand, to step beyond the self you have known, for you cannot receive a new reality while holding on to an old identity. Then comes the breaking away. The things that once felt secure begin to crumble. Friendships, habits, environments, even careers may suddenly shift. You may feel as if you are losing everything familiar, but this is not destruction, it is divine reconstruction. God does not take away to leave you empty. He removes so that He may fill you with something greater. He pulls away everything that no longer aligns with your highest good. What was once a comfort zone begins to feel restrictive, and you realize you can no longer stay where you are. This is when fear tries to creep in. The mind, conditioned by years of limitation, will resist change. It will whisper doubts, make you question the path, urge you to turn back to what is familiar. But you cannot go back. Once the divine hand has touched your life, once you have been awakened to a higher reality, the old world loses its power over you. You may try to return, but you will find that you no longer fit. The people around you may not understand. They may call you foolish, tell you that you are making a mistake, but their words will not shake you, because deep inside you know the truth. You are being called to something greater. At first, nothing may seem to be happening. Days, weeks, even months may pass, and you will wonder if you were mistaken. The vision God placed in your heart seems distant, and the evidence of its arrival is nowhere to be found. This is where faith is tested. Will you trust in what you cannot yet see? Will you hold on to the knowing even when everything in the physical world tells you otherwise? Those who surrender in this moment, who give up because they see no movement, miss the blessing that was already forming. But those who persist, who continue to believe, will soon witness the manifestation of what was promised. And then suddenly the first signs will appear. A door that seemed forever closed will open. A connection will be made, an opportunity will come, seemingly out of nowhere. But it was never out of nowhere. It was always there, waiting for you to align with it. The divine does not rush, He prepares.
And when the time is right, the shift will happen so effortlessly that you will marvel at how it all came together. You will look back and understand why things happened the way they did. The disappointments, the closed doors, the delays, all of it was leading you to this moment. The struggle was never to break you, it was to shape you. The waiting was never a punishment, it was a refinement. What is truly meant for you will never be withheld, but you must be ready to receive it. And so, when you sense that something big is coming, trust the process. Trust the preparation, trust the divine order that is working on your behalf. The signs will be there, not always in flashing lights, but in the stillness of your heart, in the shifting of your spirit, in the unfolding of events that seem too perfect to be coincidence. God does not plant dreams in your heart without the intention to bring them to life. If you have felt the calling, if you have sensed the shift, if you have seen the signs, then know this: what is coming is far greater than what you are leaving behind. There will be days when your faith is tested, when doubts creep in, when circumstances seem unchanged. But remember, the unseen is always at work before the seen takes form. The moment you desire something in your heart, the universe begins moving to bring it to you. The delay is not denial, it is a divine process ensuring that everything falls into place at the right time. You may notice that your intuition becomes sharper. You feel nudges, whispers, guiding you toward new choices. The same places and conversations that once seemed normal may begin to feel off, as if you no longer belong in them. You will be drawn to new ideas, books, messages, and even people who align with the vision that is unfolding within you. You may start waking up in the middle of the night, feeling an unshakable energy, as if something is being downloaded into your spirit. Pay attention, for these are not accidents. They are divine signals, preparing you for what is to come. There is a shedding that must take place. The old version of you cannot walk into the new reality that God has prepared. The doubts, the fears, the limiting beliefs must be released. The way you spoke, the way you thought, the way you carried yourself, if these things no longer align with the higher version of you, they must go. This is why discomfort comes before the blessing. This is why everything seems to be shaken before the breakthrough happens. The shaking is necessary. It is stripping away everything that does not serve your next level. You may feel exhausted, as if something within you is changing on a deep level. You may experience moments of loneliness, even sadness, because transformation is not always comfortable. The people who once fit in your life may start drifting away. The conversations that once interested you may now feel meaningless. Do not resist this process. Embrace it. What is meant for you cannot miss you, and what is leaving you was never meant to stay. The greatest sign that something big is coming is the deep peace that settles within you, even when the circumstances have not changed. This is the moment when you know, not because you see it, but because you feel it. You no longer look outside for validation. You do not ask others if they believe in your vision. You simply know. And this knowing is the evidence that your manifestation is near. It will not come through force. It will not require you to chase or struggle. It will flow to you effortlessly at the appointed time. And when it does, you will realize that it was never about just receiving something external. It was about becoming the person who was ready to hold it. The real blessing was not the thing itself, but the transformation that took place within you. Because once you have become that person, once you have stepped into that awareness, you will never again doubt the power of what is within you. You will never again wonder if God is listening. You will know that He was always there, always guiding, always preparing you for what was already yours. And when you finally step into the blessing, when you receive what was always meant for you, something even greater happens. You no longer see yourself as separate from it. You no longer question if you deserve it. You no longer fear that it will be taken away, because by the time it arrives, you have already become one with it in your mind. It was never outside of you, it was always within, waiting for you to recognize it as yours. The struggle was never about achieving something external. It was about awakening to the truth of who you are.
You will notice that your fears have faded. The worries that once consumed you now seem distant, as if they belonged to someone else. The weight that you carried for so long is gone, and in its place is a lightness, a knowing, a quiet certainty that no storm can shake. It is not arrogance, it is alignment. It is not wishful thinking, it is divine authority. You have stepped into the awareness that nothing outside of you has power over your destiny. You are not waiting on circumstances to change, you are the one who changes. And then the circumstances must follow. The people around you will sense it. Some will be drawn to your presence without understanding why. Others may resist, feeling the shift, but not yet ready to step into their own. Do not take this personally. Your journey is not to convince others, it is to become the living proof of what is possible. You are not here to explain how it happened, you are here to embody it. And when they are ready, they too will begin to awaken, inspired by the light that you now carry. At first it may seem so real. You will look at the life unfolding before you, the opportunities aligning, the doors swinging open, and you will remember the days when it all felt impossible. The moments when you almost gave up, the nights you cried out for a sign, the times you questioned if God had forgotten you. All of it will make sense. The waiting was not wasted. The struggles were not in vain. Every lesson, every hardship, every closed door was necessary, because without them you would not have become the person who now stands in this reality. You will see that the delays were not punishments, they were divine protection. The things you once begged for, the things you thought you needed, you will realize they were never meant for you. And you will be grateful that they did not come when you asked, because now you understand. They would have been too small for the person you have become. What God had planned was far greater than what you had envisioned. There is a sacred humility that comes with this awareness. You do not take credit for the unfolding, yet you do not shrink from it either. You walk in it with gratitude, with confidence, with the quiet understanding that you were chosen for this. Not because you were more deserving than others, but because you were willing. Willing to trust when there was no evidence, willing to let go when it felt like loss, willing to believe even when everything in the physical world told you otherwise. And so the cycle continues. Just as you were called, just as you were prepared, just as you were tested, so too will others walk this path. And when they come to you seeking understanding, when they ask how you knew, how you held on, how you made it through, you will smile. Because you will remember what it felt like to be in their shoes, standing on the edge of the unknown, searching for a sign. And you will tell them what you now know to be true, that the signs were always there, that the promise was always theirs, and that the greatest manifestation is not the thing itself. It is the transformation that happens within. There will be more mountains to climb, more seasons of growth, more moments where you are called to expand again. But this time, you will not fear them, you will not resist, because now you know that every ending is a beginning, every loss is a preparation, every challenge is an invitation to step into something greater. The process does not stop, it evolves, and so do you. You are no longer the person who waits in doubt, you are the person who walks in faith. You are no longer asking when the blessing will come, you are living as if it is already here. And that is the final sign, the one that cannot be faked, the one that cannot be rushed. When you no longer chase, when you no longer beg, when you no longer question, when you simply know, then and only then does the manifestation arrive. Not because you forced it, but because you became it. And in that moment, you will understand that you were never waiting on God, He was always waiting on you. And as you step deeper into this new phase, you will encounter even more signs, more synchronicities, that confirm you are exactly where you need to be. The whispers of the universe become louder, and the signs of divine favor appear in ways that leave no room for doubt. It will no longer be a matter of if, but a matter of when. You will find that everything is falling into place so naturally, so effortlessly, that the only explanation is divine timing. Every little action you take, every word you speak, every step you make will feel aligned with your purpose. It will feel as if you are not even trying anymore.
Everything flows with ease. The things that once felt like obstacles now feel like opportunities. You will begin to see the world through different eyes, recognizing that the divine is not outside of you, but it moves through you, shaping your experiences, transforming your reality in ways that you could never have imagined. What once appeared as a challenge is now understood as the universe's way of positioning you for the next great thing. This is where the true transformation occurs. As you stand in the fullness of your blessing, you no longer look at yourself as someone who is waiting to receive something. You see yourself as the one who is already living in the manifestation, already walking in the truth of your desires. You become the embodiment of the very thing you sought for so long. You start to realize that the gap between where you were and where you are now was not a time of waiting, but a time of becoming. In this process of becoming, you are also changing the energy around you. People will notice the shift in your vibration, the new aura of peace and confidence that you exude. Your presence will become magnetic. The energy of abundance and possibility that surrounds you will draw in the right opportunities and the right people. You will start attracting experiences that resonate with the highest version of yourself. And with each new experience, your reality will reflect more and more of the life you have been envisioning. But even as you experience this, there will be moments of uncertainty. Even though everything in your life is moving in the right direction, there will be moments where doubt tries to creep in. These are the moments when your faith will be tested. These moments are not meant to break you, they are meant to strengthen you. You will learn to trust the divine process, even when the evidence isn't visible. This is where the unseen becomes more important than the seen. This is where you truly begin to walk by faith and not by sight. What you must remember in these moments of doubt is that your journey is not linear. There are seasons in life where things will feel slower, where progress seems hidden, but this is merely the space where the seeds you've planted are growing beneath the surface. And just as the seed must first break apart and be buried in the soil before it can grow, so too must you go through periods of growth that are not immediately visible to the eye. The quiet moments of uncertainty are the very moments when everything is aligning perfectly behind the scenes. The signs you are receiving, the messages and intuitions, are not random. They are divine confirmations that you are on the right path. As you stay present, as you stay aligned with the vision that has been placed in your heart, you will begin to notice how the universe begins to work in your favor. Opportunities will seem to find you effortlessly. Relationships that support your growth will appear. Things that were once out of reach will become accessible. This is how you know that something big is on its way. And it's not just the external world that is changing, it is you. You are the one who is shifting into alignment with the abundance that is already yours. Even in those moments when you feel that the manifestation is taking longer than you anticipated, trust in the perfection of divine timing. Nothing happens by accident. Nothing happens outside of the divine order. What is meant for you cannot be delayed, and what is not meant for you will be removed. Trust that everything is unfolding in perfect timing and you are exactly where you need to be. The only thing required of you is to continue believing, continue trusting, and continue walking as if everything you desire is already yours. The signs of a blessing on the way are not always dramatic or grandiose. Sometimes they are subtle shifts in your consciousness. A thought you've had many times suddenly lands in a new way. A person you've known for years suddenly says something that resonates with you in a deep way. A circumstance you've been waiting for takes an unexpected turn, and suddenly things make sense. These signs are not always big, but they are powerful. They speak to your heart, not your eyes. They remind you that the work you've done, the growth you've experienced, is leading you to exactly where you are meant to be. As you look forward to what is to come, let go of any remaining attachment to how things should unfold. Release the need for control, surrender your plans, your expectations, and allow the divine to guide you. Trust that what is coming will be far greater than anything you could have ever imagined. You have been prepared for this moment, and you are more than ready to receive it. And when it arrives, when you finally witness the manifestation of what you've been waiting for,
Remember that this is not the end, it is only the beginning of a new chapter. What God has in store for you will continue to expand, continue to unfold, and you will continue to grow into the person who is ready to receive even greater blessings. This is how the divine works, always elevating, always expanding, always creating new levels of possibility. But even before that moment of arrival, you will know deep within you that it is already on its way. You will feel it in the air. You will see the signs, no matter how subtle they may be. And you will know that the blessing is not something coming to you from the outside, but something awakening from within. You have already called it forth. You have already aligned with it. And now it is coming to meet you where you are. This is the power of faith, the power of believing before seeing, the power of knowing that the divine is always working in your favor, always leading you toward your highest good. The signs are not for you to question, they are for you to trust. They are not meant to show you that your dreams will come true, they are meant to remind you that your dreams are already on their way. So when you see the signs, trust them. Trust that they are a confirmation of what is already unfolding. Trust that you are on the right path. Trust that God is always with you, always guiding you, always leading you toward the next step. And trust that when the time is right, what is meant for you will come, effortlessly, perfectly, and in the most divine way imaginable. The only thing you need to do is stay aligned, stay faithful, and continue to walk as if everything you've ever wanted is already yours. In the moments leading up to the manifestation of what you've been desiring, you will begin to feel an undeniable sense of anticipation in the air, as though everything is on the verge of something big. Even when the world around you remains quiet, you will sense that there is a shift occurring, a shift that only those who are aware, those who are attuned to the signs, will feel. This quiet anticipation is the subtle yet profound confirmation that God is working in your life. It is not a time to doubt, but a time to trust and hold steadfast to the vision that has been planted in your heart. During this period of transition, you will also notice that your thoughts and emotions are becoming more elevated. You may experience moments of pure inspiration and clarity. Ideas that once seemed impossible now seem not only possible, but inevitable. This is a sign that you are tapping into a higher frequency of awareness. You are no longer limited by the constraints of the physical world. You are beginning to operate in the realm of divine possibility. You may also feel an overwhelming sense of peace, as though you are at one with the flow of life. The worries and anxieties that once plagued you seem to dissipate. You no longer feel the need to rush or force things to happen. You have released the need to control the outcome, because you now trust that it is already on its way. You trust that the universe is bringing you exactly what you need, exactly when you need it. In this space of peace, you will begin to see that the manifestation you've been waiting for is not an external event, but an internal one. It is an expansion of consciousness. It is the realization that you are already worthy of everything you desire. You are already aligned with the abundance, the love, the success, the happiness that you seek. What you've been waiting for has always been within you, and now, as you have grown and transformed, it is simply a matter of time before it becomes your physical reality. You will also notice that the world around you is starting to mirror your internal transformation. The people in your life will begin to reflect your new energy. Those who have supported your journey will become even more present and aligned with you. They will offer you the help, encouragement, and opportunities you need to move forward. And those who are not aligned with your new path may begin to fade away, not because of anything you've done, but because they no longer resonate with the person you have become. This is not a time to hold on to what no longer serves you. It is a time to release, to let go of attachments, to make space for the new blessings that are on their way. The old must make room for the new, and this process of release can sometimes be challenging. But understand that the things, people, and situations that no longer align with your highest good are being removed not as a punishment, but as an act of divine love. It is God clearing the path for you, making space for the blessings that are waiting to enter your life.
The more you let go, the more you will feel a sense of lightness. The weight of the past, the weight of your doubts, the weight of your fears will begin to lift, and in its place will be a sense of freedom. The freedom to step fully into your purpose, the freedom to embrace the vision of who you are becoming. This is when you will feel the power of your own divine nature more profoundly than ever before. You will realize that you have always been in control of your reality, and now, with this awareness, you can consciously choose the experiences that align with your highest desires. As the manifestation draws nearer, you may also notice that your inner dialogue is shifting. The negative self-talk, the limiting beliefs, the doubts that once held you back are starting to lose their grip on you. You will catch yourself speaking in ways that are more empowering, more positive, more affirming of your worth. You will catch yourself visualizing the life you desire as if it is already here. You will no longer be speaking in terms of I hope or I wish or I want. You will begin to speak in terms of I am, I have, I know. This shift in language is powerful because it reflects a shift in your consciousness. You are no longer asking for permission. You are claiming what is rightfully yours. In this place of alignment, you will begin to notice the synchronicities that surround you. They may show up in the form of a song that speaks directly to your situation, a conversation with a stranger that offers the exact insight you need, or a series of seemingly random events that come together in perfect harmony. These synchronicities are God's way of reminding you that you are on the right path. They are signs that you are not alone, that you are being guided every step of the way. And as you notice these synchronicities, you will begin to trust more deeply in the divine plan that is unfolding in your life. The more you trust, the more the universe will confirm your trust with blessings, opportunities, and experiences that reinforce your belief in the unseen. It will become clear that what you once saw as coincidences were never coincidences at all. They were divine interventions guiding you towards the life you've always dreamed of. As you continue to walk this path, you will realize that what you've been waiting for was never a destination but a journey. The manifestation, the blessing, the abundance that you've been seeking, these are not just the end result, they are part of the ongoing process of your growth, your transformation, your becoming. Every step you take along the way brings you closer to the fullest version of yourself, and as you evolve, so does the manifestation. The more you grow, the more you align with your true purpose, the more your desires manifest in ways that feel effortless and natural. This process of growth is ongoing. Just as the seed continues to grow, sprout, and reach for the sun, so too will your life continue to unfold in perfect divine timing. What you experience today is only a glimpse of the infinite possibilities that are ahead of you. The moment you think you've reached your fullest potential, you will find that there is always another level, another opportunity, another manifestation awaiting you. And even as the manifestation arrives, as the blessing pours into your life, it is essential to remember that this is not the end. It is just the beginning of a new chapter, a new season of growth, abundance, and transformation. There will always be more to come. What God has in store for you is infinite. And as you continue to live in alignment with your true self, as you continue to trust in the divine process, you will begin to see that the signs, the synchronicities, the manifestations, they were always leading you to this moment. The moment when you would realize that everything you have been through, everything you have experienced, has been preparing you for this. You are exactly where you are meant to be, and everything that is meant for you is already on its way. You will come to realize that the universe has always been on your side. Every challenge, every obstacle, every difficult moment was not a punishment, but a purposeful step in your evolution. When things did not go as you had planned, it was simply life redirecting you toward a path that was more aligned with your true desires. The disappointment you once felt was merely a misunderstanding. What seemed like a loss was actually an invitation for something greater. In the moment of hardship, you may have wondered why things weren't working out, but as you look back, you will understand that those setbacks were simply preparing you for the divine appointment that awaited you. The truth is, everything in your life has been preparing you for this moment, and you have been more than ready.
You may have doubted yourself, questioned your worthiness, or even wondered if the dreams you've been holding on to were too big. But now, as you reflect on the journey, you realize that there was no need to question. All of those signs, all of those moments of divine guidance were meant to show you that your dreams were always meant for you. Now, as you stand on the precipice of this new chapter, it will feel like the universe itself is conspiring to help you succeed. Opportunities will start to present themselves in ways you could never have predicted. They will come from unexpected sources, but they will come. You may even experience moments of synchronicity, where things fall into place effortlessly. The right people will enter your life at exactly the right time. The resources you need will appear just when you need them. This is not coincidence, this is divine timing. And as these things unfold, you will feel the truth in your heart that you are exactly where you are supposed to be. In moments of doubt or fear, return to the knowing that you have been led here. You are not alone. The universe is moving in perfect alignment with your desires. Trust that you are being guided every step of the way, even when you cannot see the full picture. The path ahead will become clearer with each step, and in time you will see that everything that has happened up to this point was part of a larger divine plan. A plan that only God could have orchestrated. You will also find that as you embrace this new reality, you begin to step into your true power. The fear, the uncertainty, the limitations that once held you back will fall away. In their place, you will feel a newfound confidence, one that comes not from external validation, but from an inner knowing that you are more than capable of handling everything that comes your way. You will recognize that you are the creator of your own reality. What you have been waiting for, what you have been dreaming of, has always been within you. You were born for this. You were born to receive your blessings. And as you step into this new chapter, you will notice a shift, not just in your external world, but in your inner world as well. Your relationship with yourself will deepen. You will begin to love and accept yourself in ways you never thought possible. The parts of you that were once hidden, that you were afraid to show, will now come into the light. You will no longer feel the need to hide or shrink yourself in the presence of others. You will stand tall in the fullness of who you are, embracing every aspect of your being. This love for yourself is not about arrogance or pride. It is about recognizing your inherent worth. It is about understanding that you were always worthy of the blessings that are now coming to you. And as you fully accept this truth, you will find that your life begins to reflect this newfound sense of self-love. You will attract people, experiences, and opportunities that align with the highest version of who you are. This is the law of attraction in its purest form. When you love yourself and know your worth, the universe reflects that back to you. As you continue to align yourself with the truth of who you are, you will also begin to notice that you are no longer seeking validation or approval from others. You no longer feel the need to prove yourself. You simply show up as you are, knowing that you are enough. This inner knowing will free you in ways you never imagined. You will no longer feel the need to chase after things or people to feel complete. You are already complete. You are already whole. In fact, the more you embrace this sense of completeness, the more you will attract everything you've ever wanted. The universe operates in cycles of abundance. The more you align with your true self, the more the universe aligns with you. Opportunities will flow effortlessly into your life. The relationships you desire will blossom. Financial abundance will begin to manifest in ways you never imagined. Your health will improve and your confidence will soar. This is the flow of divine abundance, and once you tap into it, it becomes a constant, unbroken stream in your life. But it is important to remember that this process of manifestation is not about forcing or striving. It is not about controlling or manipulating the universe. It is about surrendering to the flow. It is about trusting that what is meant for you will come at the perfect time. You do not need to chase after it. You do not need to make it happen. All you need to do is align yourself with the truth of who you are, and the universe will respond. The manifestation of your desires is not just about receiving the material things you want. It is also about the internal transformation that happens along the way. You are becoming more and more aligned with your true purpose,
And as you step into this alignment, you will find that everything in your life begins to change. Your career, your relationships, your health, and your finances will all shift in ways that reflect the deeper work you've done. The external world is simply a reflection of your internal world. As you evolve internally, so too will your outer reality. And as you continue on this journey, you will realize that the manifestation of your desires is not a destination. It is a continuous process of growth, expansion, and alignment. The moment you think you have arrived, you will discover that there is always another level of evolution awaiting you. This is the beauty of the spiritual journey. There is always more to discover, more to learn, more to become. Each step along the way is a step toward greater self-realization and greater alignment with your divine purpose. And with each step, you will find that the signs you are receiving grow clearer and clearer. The synchronicities become more frequent. The divine guidance becomes more apparent. And you will find that your desires are not far off. They are already in motion, already on their way. You are simply witnessing the unfolding of what has already been set in motion. So as you move forward, trust the signs, trust the process, trust that what you have been waiting for is already on its way. You are aligned with the universe, you are aligned with your highest self, and you are now walking in the fullness of your divine purpose. Every step you take brings you closer to your dreams, closer to your true power, and closer to the manifestation of everything you've ever desired. Trust that it is all unfolding perfectly, and trust that you are exactly where you need to be. As you continue to walk the path toward your desires, you will notice that you no longer feel the need to force things to happen. There is a quiet confidence that begins to take root within you. The days of pushing and striving are over. The struggle no longer holds power over you. You have come to realize that the key to receiving your blessings is not in the effort, but in the surrender. You surrender to the flow of life. You surrender to the natural unfolding of your desires. You surrender to divine timing. In this surrender, you find peace. The anxious thoughts that once plagued you begin to dissipate. No longer do you wake up each morning wondering if today is the day everything will fall into place. Instead, you wake up with a sense of calm, knowing that your desires are already on their way. You are not waiting for something to happen. You are witnessing the process of manifestation. You are no longer attached to the outcome, but rather you are enjoying the journey. You begin to understand that the universe operates in perfect order. There is a rhythm, a flow, a divine timing that governs all things. What is meant for you will come to you at the perfect moment. You no longer need to rush. You no longer need to chase after your dreams. The moment you release the need to control the process, everything begins to fall into place. This is when the magic truly happens. When you let go of your expectations, you open yourself up to receiving more than you could have ever imagined. The blessings that you once thought were out of reach are now within your grasp. You will find that opportunities begin to show up in your life in ways that are beyond your wildest dreams. The doors that were once closed begin to open. The people who once seemed distant now draw near. Your financial abundance begins to flow. Your health improves, your relationships flourish, and your sense of purpose becomes clearer than ever before. But even as you witness this beautiful unfolding, you must continue to hold firm to the knowing that everything is happening for your highest good. There may still be moments of doubt. There may be times when the old fears and insecurities resurface. But these moments are not to be feared. They are simply remnants of the past that are leaving you. As you move toward your higher self, the old versions of you will fall away. The fears, the doubts, the limiting beliefs. They no longer serve you. They are simply the residue of a life that is no longer aligned with your true desire. When these fears arise, do not meet them with resistance. Acknowledge them. Understand that they are simply the mind's way of clinging to the familiar. But know this, you are not the fears. You are not the doubts. You are not the limitations. You are something far greater. You are a divine being capable of creating the life you desire. And as you remember this truth, the fears begin to lose their power. They begin to fade into the background as the light of your true self
shines brighter than ever before. As you embrace this truth, you will notice that the signs you are receiving become even more clear. The messages from the universe become more direct, more frequent. You will find yourself in the right place at the right time, having the right conversations with the right people. Opportunities will begin to flow to you effortlessly. You will find that the world around you begins to mirror your inner state of alignment. What you focus on, you attract. What you believe, you create. And as you embrace this new way of being, you will also realize that your dreams are not just about material success. They are about becoming the fullest expression of who you truly are. The blessings that you are receiving are not just about what you can hold in your hands, but about the person you are becoming in the process. You are shedding the layers of fear, doubt, and insecurity. You are revealing the divine being that has always been within you. The desires you once thought were separate from you are now becoming one with you. You will find that the more you step into this truth, the more you begin to align with the abundant flow of the universe. Everything you need is already here, waiting for you to tap into it. The love, the success, the joy, the peace, they are all within you. And as you align with this truth, the external world will begin to reflect it back to you. What once seemed distant or impossible now becomes your reality. The signs will continue to guide you, they will continue to show you the way, and you will know without a shadow of a doubt that the universe is working in your favor. This alignment will also bring with it a deep sense of gratitude. As you witness the unfolding of your desires, you will begin to see the beauty in every moment. You will recognize the divine intelligence behind everything that has happened, everything that is happening, and everything that is yet to come. The ups and downs, the twists and turns were all part of a larger plan. They were all necessary to bring you to this moment, the moment where you are finally ready to receive all that you have been dreaming of. And when you truly understand this, your heart will swell with gratitude. Gratitude for the journey, gratitude for the lessons learned, gratitude for the people who have crossed your path, gratitude for the challenges that shaped you, gratitude for the growth, the transformation, and the miracles that are unfolding in your life. In this state of gratitude, you will find that your life continues to expand in ways that you could never have imagined. You will begin to realize that the manifestation of your desires is not just about but about who you become in the process. The journey itself is the gift. It is in the becoming that you find your greatest treasures. And as you continue to grow, you will find that your capacity to receive expands. The more you grow, the more you are able to hold the blessings that the universe has waiting for you. And so, as you stand on the threshold of this new chapter, know that the signs are everywhere. They are guiding you. They are showing you that the time has come for you to receive all that you have been waiting for. You are ready, you are worthy, and the universe is ready to deliver. Keep your heart open, trust the process, let go of the need to control, and watch as your dreams unfold before your very eyes. The universe is calling you to step into the fullness of your power, to embrace the abundance that is your birthright, and to trust that everything is falling into place. And when you look back on this moment, you will see that it was always meant to be. The signs were always there, guiding you, leading you toward the divine manifestation that you are now about to receive. You are on the path of your highest good, and nothing can stop you now. As you continue on this journey, know that you are not alone. Every step you take, every decision you make is in perfect alignment with the divine plan. The signs are all around you, pointing the way, confirming that what you desire is not just a dream, but a reality in the making. The universe, in all its infinite wisdom, is working in your favor, preparing the perfect circumstances for your highest good. Trust in the process, trust in yourself, and most importantly, trust that everything is unfolding exactly as it should. As you open your heart and mind to the abundance that is already yours, you will find that everything you need will be provided. The doors will open, the opportunities will present themselves, and the blessings you've been waiting for will manifest before you. All that you have to do is remain grounded in your faith, keep your eyes open for the signs, and embrace the journey with gratitude,
and trust. The time has come for you to step fully into your power and receive all that has been promised to you. You are ready to experience the greatness that has always been destined for you. Your desires are already on their way, and as you continue to align with the truth of who you are, nothing will be able to stop the flow of blessings that are about to pour into your life. You are on the verge of something extraordinary. Believe it, trust it, and watch as your life transforms in ways that will leave you in awe. The best is yet to come. Act as if you have already won millions. This isn't just a phrase, a fleeting thought, or wishful thinking. It's the very core of how the universe operates. What you believe, what you deeply feel, is what manifests in your life. It's as simple as that. The mind is a powerful creator, and the way it creates is through the feeling of already having what it desires. Think of the time when you have had a strong, burning desire for something. Maybe you wanted a promotion, a car, or a home. If you truly believed it was already yours, what would you do? How would you walk? How would you carry yourself? Would your thoughts be filled with worry about how to get it, or would they be filled with gratitude for its arrival? When you act as if you already have it, the universe must follow suit. It can't help but give you what you believe you already possess. The idea of acting as if you have already won millions goes beyond just the physical manifestation of wealth. It's a state of mind. It's an embodiment of abundance. When you are fully immersed in the feeling of already having millions, it doesn't matter what the outside world looks like. Your inner world aligns with what you are consciously claiming. Consider for a moment the feeling of relief, peace, and joy that comes from knowing all your needs are already met. No more worrying about bills, no more anxiety over the future. This feeling is not reserved for the future. It's not something you wait for. It's something you create right now. Your emotions are the key. They are the magnetic force that draws in everything you have ever wanted. And when you feel as though you already have everything you desire, you're in the perfect state to receive it. The world, as it appears to you, is only a reflection of your inner world. If you believe that you are always struggling, always searching, always seeking, then that will be the reality you create. However, if you choose to live as though you have already won, as though you are already living in abundance, scanning the menu. The price as blurred as her mind did the math. $2.47. Cup of coffee was $1.50. The cheapest item, a single piece of toast, was $1.75. She could not afford even toast for her children. Her eyes drifted to the man in the corner, to the plate in front of him piled high with bacon, eggs, hash browns, and toast. There was still plenty left. Before she could talk herself out of it, she walked toward his table. The man looked up as she approached. He set down his fork and gave her his full attention, as though she were the only person in the room. Elaine's voice came out barely above a whisper. "Excuse me, sir. I am so sorry to bother you. But when you are finished, could we have what is left on your plate?" The diner went silent. Wanda froze behind the counter. A middle-aged couple in a nearby booth turned to stare, their expressions ranging from pity to disgust. The man did not move at first. He just looked at her, really looked at her, taking in the sunburned shoulders, the blistered feet, the protective way she held her children. His gaze held no judgment, no pity, something else entirely. Then he spoke, his voice low and kind. "How long since they ate?" Elaine's throat closed up. She could not answer. "Mom." Caleb tugged at her shirt, his small voice weak. "My tummy hurts."
Something shifted in the man's expression. He raised his hand, and Elaine flinched instinctively, an old reflex. But he was only signaling to the waitress. Wanda, he called. 3 full meals, same as what I am having, and please make it quick. These children need to eat now. Wanda hesitated. Keenan, honey, I have to charge for it. Triple it if you need to. Just get the food out here. Wanda nodded and disappeared into the kitchen. Elaine stood frozen. This stranger was ordering full meals for her and her children, as if it were the most natural thing in the world. Sit down, he said gently, gesturing to the booth across from him. Please. Every instinct screamed at her. Men who seemed kind always had an aim. Her husband had taught her that lesson many times over. But Rosie's small hand squeezed hers, and Caleb whimpered again, and Elaine's desperate need to feed her children overrode her fear. She said. The man pushed his own plate across the table. Start with this. More is coming. You cannot. You can, and you will. His voice was firm but gentle. He broke off a piece of toast and handed it to Caleb, who looked at Elaine for permission. She nodded, and the boy snatched it, cramming it into his mouth as if someone might take it away. Rosie followed suit. Elaine watched them through burning eyes but refused to let the tears fall. Thank you, she managed. You do not have to do this. Yeah, I do. The man leaned back. I have kids too. Twin girls. They are 14 now. Live with their mother in California. Elaine looked up, surprised. A motorcycle rider with children. How old are yours? He asked. 4. They turned 4 in February. Good age. A sad smile crossed his face. Enjoy it while it lasts. Wanda arrived with plates piled high with pancakes, eggs, bacon, and fruit. The smell made Elaine's stomach cramp painfully. He said, you cannot take care of them if you are running on empty. Elaine's body betrayed her pride. She picked up a fork and ate, forcing herself to go slowly so she wouldn't get sick. It was then that a voice cut through the moment, sharp and dripping with contempt. You really should not encourage these people. A man at a nearby table, perhaps 50, wearing an expensive shirt and a gold watch, was looking at Elaine with undisguised disgust. Give them something once, and they will keep coming back, he continued loudly. That is why people like this never learn to stand on their own feet, always looking for a handout. Elaine wanted to disappear. This was her greatest fear, being seen as a beggar, a burden. But the stranger across from her turned slowly to face the wealthy man, and when he spoke, his voice was calm but carried an edge like steel. Do you know anything about her story? Do you know how far she has walked to get here? Do you know what she has been through? The wealthy man's face reddened. I know I worked for everything I have, and I suppose nobody ever gave you a chance, a job, an opportunity. The stranger's eyebrows rose. Let me tell you something. Kindness does not cost anything, and wealth does not give you the right to judge another human being. Let's get you somewhere comfortable, as Dolores led them toward a small cottage at the edge of the property. Elaine looked back over her shoulder. Kino and Marcus had their heads together, speaking in low voices. She wondered what they were saying about her situation, about the danger she might be bringing to their doorstep. But she was too exhausted to worry about it now. One step at a time, that was all she could manage. The guest cottage was small but immaculate.
everything in your world will eventually align with that energy. It's inevitable. The secret is not in waiting for the circumstances to change before you act. The secret is in changing your mindset, your feelings, and your belief system right now. When you can embody the feeling of already having what you desire, you begin to see the results in your life. It's not a future event that's coming your way, it's a present experience that you're calling forth. There is no shortage in the universe, there is only abundance, and the universe reflects back to you what you are internally vibrating. So take a moment each day and feel the joy of already having everything you need. Feel the gratitude for the millions you've already won. Feel the freedom and security that comes with knowing that your success is already yours. Live in that feeling. It's a powerful vibration, one that cannot be denied. You must trust the process. Understand that once you plant that seed in your mind and feel the emotions associated with already having, the universe has no choice but to bring it into your reality. It cannot do otherwise. It is the law of the universe. So, walk through your day as if the millions are already in your bank account. Dress as if you already have the wealth, the power, and the confidence you desire. Speak as if you already know your worth. Your actions should reflect the person you are becoming, not the person you were yesterday. If you walk as if you are already victorious, victory must follow you. This is the power that you hold. This is how you create your world. Your imagination is the tool that shapes your reality, and the emotions you attach to that imagination fuel its manifestation. You are the creator of your life. The universe is simply responding to what you believe and feel. The more you embody the feeling of already having millions, the faster that reality will appear in your physical world. There is no waiting, there is no struggle. The moment you align your thoughts, emotions, and actions with the belief that you are already victorious, the universe begins to move in your favor. You see, the mind doesn't distinguish between what is real and what is imagined. It reacts to the images and feelings that you present to it. This is where the power lies. The reason why people fail to manifest their desires is because they wait for external conditions to change before they act as if they have already won. But the key to unlocking your potential and manifesting your desires is to start acting in alignment with your goal before it even materializes. It's about becoming the person who already has everything, not waiting to become that person when things improve. The moment you decide to adopt this mindset, you are stepping into a new reality. Imagine yourself right now with all the wealth you desire, the luxury you dream of, the freedom you crave. How would you wake up in the morning? How would you approach your day? What would your energy be like? You would walk into your day with the assurance that everything is taken care of. There would be no fear, no anxiety. You would not be second-guessing your decisions, wondering how things are going to work out. You would already know. You would be the person who walks with grace, with confidence, knowing that the universe is already delivering what you have asked for. So take a deep breath and feel that feeling of already having it all. Feel the comfort of financial freedom. Feel the power of knowing that everything you desire is within your grasp, that you can achieve anything because it is already yours in the unseen world. The moment you feel this in your body,
You create an energy field that attracts that very thing. You don't have to worry about how it will come, when it will come, or who will help you get there. Just focus on the feeling of already having it. When you act as if you've already won millions, you are stepping into the vibration of success. You are aligning your energy with that of abundance. You are no longer operating from a place of lack or limitation. You are choosing to step beyond the limitations of your current circumstances and into the world of unlimited possibilities. And in that world, you are already a millionaire, a success, a person of power and influence. Your outer world is simply a reflection of what you are embodying within. Think about a time in your life when you felt truly successful. Maybe it was when you achieved something small, or when you first realized that you had a special gift or talent. How did you feel in that moment? Did you feel unstoppable? Did you feel like the world was yours for the taking? That feeling is not reserved for that one moment. That feeling can be yours every single day. You have the ability to recreate that sense of success at any moment. All you have to do is connect to that feeling and hold it with every fiber of your being. Now let's break this down. Acting as if you have already won millions means living in the end result. The key is to feel the emotion of already having it. Don't focus on the lack of what you don't have right now. Focus instead on the abundance that is already here. The moment you start to feel as though your desires are already fulfilled, you activate the law of attraction. The universe begins to work in mysterious ways to bring that reality to life. It's like planting a seed in the fertile ground of your mind, then watering it with your feelings of gratitude, joy, and belief. And soon, that seed will sprout into the reality you have imagined. This isn't just a concept for the wealthy or the lucky. This is a law that works for anyone at any time. It doesn't matter where you are right now, what your current financial situation is, or what challenges you may be facing. The only thing that matters is what you believe is possible for you. When you adopt the mindset that you have already won, you open yourself up to a world of possibilities. Your potential is limitless, and your current circumstances are only a reflection of past thinking. The moment you begin to shift your inner world, the outer world has no choice but to follow. One of the most powerful things you can do in this process is to silence the voices of doubt. Every time you feel yourself questioning how or when it will happen, remember that you are creating your reality right now. Do not allow past failures or mistakes to shape your future. They are irrelevant. Your past does not define you. What matters is the present moment and the energy you are giving off. You have the power to change your story right now by simply changing your thoughts and feelings. Think about how a successful millionaire would think. They would not waste time worrying about how to make money or whether they are good enough. They would know without a doubt that their success is inevitable. They would feel the freedom of already being successful and would walk with that confidence in every step. And that is exactly the mindset you must adopt. You must stop waiting for external circumstances to change before you believe in your own success. The universe is waiting for you to act as if it has already delivered. And once you do, the floodgates open. Now consider your actions. If you already had millions, would you be afraid to take bold steps? Would you be hesitant to pursue opportunities that align with your desires? No. You would move with confidence, knowing that nothing could stand in your way. You would take risks, make investments, and surround yourself with people who align with your vision. You would operate from a place of certainty, not fear. This is the energy you need to embody. It's the energy of someone who already knows they are destined for greatness. When you live as if your desires are already fulfilled, you begin to attract people, circumstances, and opportunities that align with that belief. The world will mirror back to you the confidence and success you carry within. But there is one more thing to remember. As you begin to embody this new way of being, you must also let go of the need for control. Trust the process. The universe works in its own time, and your job is to be patient and trusting. The moment you release your attachment to the outcome and allow things to unfold naturally, that's when the miracles begin to happen. You don't need to know the how or the when. You just need to know that it is already done.
When you live with the understanding that everything you desire is already on its way, you begin to take inspired action. This is the action that is aligned with your highest self. You won't be forcing things to happen. You will be walking with ease, knowing that every step you take brings you closer to the reality you've already created in your mind. The true power comes when you combine the feeling of having already won with the inspired action that flows effortlessly from that feeling. You begin to move through life with grace, knowing that everything you need is already coming to you. There is no rush, no struggle, only an unwavering belief that you are already a success. It's time to stop playing small. It's time to stop doubting your act as if you have. By shifting your energy, your universe that are always working in your favor. Once you do this, nothing can stop you from manifesting the life you desire. The universe will respond in kind, bringing you the success, abundance, and freedom you are already living in your mind. You are already the person you are meant to be. It's time to step into that power and live the life that has always been waiting for you. Every desire, every dream, every goal that you've ever had is already yours. Now it's up to you to act like it. The universe is ready to deliver. All you have to do is accept it. You see, this is not just about the thoughts that cross your mind in fleeting moments. It's about how deeply you can embody the reality that you are already successful. It's about making that feeling of abundance, of victory, of knowing that your dreams are already accomplished, so ingrained in your being that it becomes natural. You must stop thinking of success as something far in the future, as something that you reach after years of struggle. Success is a feeling, it's a state of mind. And once you realize that, you unlock the door to your limitless potential. When you stop waiting for success and instead act as though it has already arrived, you create an entirely different energy. Imagine waking up every day knowing you are already wealthy. How would that change your thoughts, your attitude, your interactions with others? You would no longer be stressing over small details, second-guessing decisions, or worrying about the future. The act of already possessing the wealth, the life, the success you desire creates a new lens through which you experience the world. You don't see lack anymore. You see opportunity, possibility, and expansion. You no longer are seeking validation from external sources because you already know who you are. You are already the embodiment of success. And that truth resonates throughout every aspect of your life. The shift begins with a simple decision to choose the life you want right now. You have to make the choice to decide that you are already worthy of the life you envision. And that decision must come with unwavering faith and trust. Faith that you are on the right path. Faith that everything you desire is already coming to you. And trust that the universe is orchestrating everything for your highest good. No matter what you see in front of you, no matter how things may appear to the naked eye, trust that everything is working behind the scenes, aligning perfectly for your success. And it is easy to get distracted by what is happening around you. Your current circumstances may not reflect the abundance you desire, but the truth is, they don't matter. Your reality is shaped by your thoughts and feelings. And when you align yourself with the feeling of already having won, you activate the creative forces of the universe. The only way for anything to change is for you to change within. Once you make that internal shift, everything else must follow. The universe can only reflect what you are embodying. So ask yourself, what would you do today if you already had millions? Would you be more confident? Would you take bigger risks? Would you start new projects? The power lies in your willingness to act from that place of certainty, from that place of knowing. Don't wait for the perfect moment to start. The perfect moment is right now, and it's already here. By embodying the success you desire, you begin to send out a vibration of abundance, and the universe matches that vibration. Opportunities that you may have never noticed before will start appearing. Doors that were once closed will begin to open, and people who align with your vision will start to enter your life. This is not a coincidence. This is the law of attraction at work. There's no need to struggle. There's no need to worry.
The act of living as if you've already won millions is a form of surrender. It's about releasing the fear of lack and stepping into the certainty of abundance. When you stop looking for proof of your success and instead start embodying the feeling of it, you immediately attract more of it into your life. This is not about forcing outcomes. It's about allowing what you've already claimed in your mind and heart to unfold effortlessly in the physical world. The universe is not concerned with time. We often think that we have to wait for the right moment, for the perfect conditions, for everything to be in place before we can claim success. But the truth is, you can have everything you desire in this very moment. Because the moment you decide that it's already yours, it is. You are the creator of your reality, and your power lies in how you choose to see yourself and your world. Once you embrace the idea that success is already yours, you stop chasing it. You stop running after something that already exists. And this is where true power is found. When you realize that what you've been chasing was always within you. Living as if you've already won also means treating yourself with the respect and dignity that you would give someone who has already accomplished their dreams. How would you carry yourself? Would you allow negative self-talk or doubts to creep in? No, you would speak to yourself with love, compassion, and encouragement. You would no longer question your worth or second-guess your abilities. You would trust that everything you need is already within you and that you are deserving of everything you've ever dreamed of. You must raise your standards and hold yourself to the highest possible vision of who you are. This is how you attract your desires. Not by begging for them, but by knowing that they are already yours. If you truly believed that you were already a success, together stop making excuses. There is no need to worry, procrastinating. No need to stop saying, no need to control. All you need to do is today. You would show up for your dreams as if they were already in your possession. You would pour your energy into what matters because you would know that every step you take brings you closer to the life you have already claimed. The universe responds to your action, and when you रमेश ने अपने तीसरे ओवर को शुरू किया एक विकेट के साथ। पिछली 2 गेंदों में 2 विकेट आ गए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत के रास्ते खुल गए हैं। छोटी गेंद थी, कट शॉट खेला और सीधे खिलाड़ी के हाथों में बॉल गई। कार्तिक शर्मा, he couldn't finish the game। 16.1 के बाद 169 पर 5 टीम चेन्नई सुपर किंग्स। चल दिए डेवाल ब्रेविस के पीछे पीछे कार्तिक शर्मा भी। यहां से आपके साथ जुड़ेंगे के एम पंक सर। सर स्वागत है आपका। तो चलिए साथियों, अभी अभी 5वां विकेट भी गिर चुका है कार्तिक शर्मा के रूप में, जो कि 20 गेंदों पर 20 रन बनाकर के आउट हुए हैं शिवम दुबे। और अब दूसरी छोर से हमें प्रशांत वीर दिखेंगे। तो आज सरफराज खान नहीं बल्कि प्रशांत वीर को मौका मिल रहा है, साथ देंगे शिवम दुबे का। और अगर हम बल्लेबाजी पर चर्चा करें तो आने वाले बल्लेबाज में एक जेमी ओवर्टन बाकी रह जाते हैं। इस वक्त स्थिति थोड़ी सी नाजुक दिख रही है चेन्नई की, हालांकि लक्ष्य बहुत ज्यादा नहीं है। 23 गेंदों पर बनाने हैं 35 रन चेन्नई सुपर किंग्स को। प्रशांत वीर आए हैं साथ देने के लिए शिवम दुबे का। कार्तिक शर्मा 20 गेंदों पर 20 रन बनाकर के आउट हुए। और मुझे लगता है कि शायद कार्तिक शर्मा को बताना पड़ेगा कि उन्हें किस तरह से खेलना पड़ेगा, क्योंकि 2 मुकाबलों पर उन्होंने जब रन बनाया तो स्ट्राइक रेट काफी कम थी। और इस लेवल पर आकर के आईपीएल में जब सभी टीमें एक अलग ही दर्जे की क्रिकेट दिखा रही है तो वो स्ट्राइक रेट से काम नहीं बनने वाला है। शिवम दुबे और प्रशांत वीर इस वक्त क्रीज पर मौजूद, दोनों ही अपना पहला गेंद खेलेंगे। फिलहाल आविश खान की गेंद, प्रशांत ने इस गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेला है। डीप पे फील्डर मौजूद हैं, मिलेगा सिंगल। और यहां से साथियों बता दूं कि आज का जो दूसरा मुकाबला वो भी अगले 10 मिनट के अंदर ही शुरू होने वाला है। वहां पर टॉस जीतने के बाद आरसीबी ने चुनी है गेंदबाजी। बल्लेबाजी करेगी मुंबई की टीम और मुंबई की कप्तानी आज कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव। तो थोड़ी देर में आज का दूसरा मुकाबला भी आप हमारे इसी चैनल पे उसका भी लुत्फ उठा पाएंगे। कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। फिलहाल नजर डालते हैं आने वाली गेंद पर, जो कि लेकर के आ रहे हैं आविश खान। सामने होंगे शिवम दुबे। और जी हाँ दोस्तों, आप में से कई लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी भी जो भी मित्र हमें लाइक सब्सक्राइब करेंगे उनका नाम स्क्रीन पे भी लिख दिया जाएगा। ओवर द विकेट आविश की पटकी हुई गेंद लेग स्टंप के बाहर की, वाइड का इशारा है अंपायर की तरफ से। और अब चाहिए 22 गेंदों पर 33 रन।
तो आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच का मुकाबला थोड़ी देर में शुरू होगा। रोहित शर्मा खेल रहे हैं, विराट कोहली खेल रहे हैं, दोनों ही आइकन्स आपको अगले मुकाबले पर खेलते हुए दिखेंगे। मुंबई इंडियंस की बात करें तो रोहित शर्मा रेयान रिकल्टन के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। नंबर 3 पे नमन धीर आएंगे। आगे दिखेंगे सूर्य कुमार यादव जो आज कप्तानी कर रहे हैं, तिलक वर्मा, विल जैक्स, राज अंगद बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह और अल्लाह मोहम्मद गजनफर। तो यानी कि मुंबई ने कोई बदलाव नहीं किया अपनी टीम में। इसी बीच अगली गेंद मिडऑन पर हल्के हाथों से खेला गया शॉट, कोई रन बनाने का मौका नहीं। यहां से अब चाहिए 20 गेंदों पर 33 रन, अजीन 21 गेंदों पर 33 रन चाहिए। वहीं अगर आरसीबी की बात करें तो टीम में विराट कोहली, जेकब बेथल है, फिल सॉल्ट आज भी नहीं खेल रहे। टीम में है रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, सुयश शर्मा और रसिक सलाम। तो कोई बदलाव आरसीबी ने भी अपनी प्लेइंग 11 पे नहीं किया है। अगली बॉल लेकर के चलते हुए अविश खान, सामने है शिवम दुबे। यह है ओवर की चौथी बॉल। यहां से 21 गेंदों पर चाहिए 33 रन। इस बार हल्के हाथों का प्रयोग करते हुए गेंद को स्क्वायर की तरफ खेल दिया, मिलेगा 1 रन। शिवम दुबे और प्रशांत वीर दोनों अब 1-1 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। 16.4 ओवर पे चेन्नई 172 पे 5 ओवर की पांचवी बॉल अविश खान की, सामने प्रशांत वीर। और अगर हम बात करें बल्लेबाजी की तो संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, उर्विल पटेल ने ठीक ठाक बल्लेबाजी की। उर्विल पटेल ने तो खैर बेहद शानदार बल्लेबाजी की। कार्तिक शर्मा और डेवाल्ड ब्रेविस इन्होंने थोड़ा निराश किया। कार्तिक शर्मा आसान रन बना रहे हैं। देखिए रन बॉल खेलना बहुत मुश्किल नहीं है टी20s में, आईपीएल में। अगर आप वैसा करेंगे तो आपके लिए जगह नहीं बन पाएगी। कार्तिक शर्मा ने भले ही पिछले मुकाबले पे अर्धशतक लगाया, पिछला मुकाबला भी उन्होंने अंत तक टिक करके खेला, लेकिन समय के हिसाब से इन्हें स्ट्राइक रेट को बदलनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो जितने भी मित्र खुश हो रहे हैं कि कार्तिक शर्मा ने तो अर्धशतक लगा दिया, कार्तिक शर्मा अंत तक नाबाद थे, लेकिन अगर चेन्नई को आईपीएल खिताब जीतना है तो स्ट्राइक रेट पे भी नजरें बनी रहनी चाहिए। आज वही हुआ। कार्तिक शर्मा क्यों आउट हुए? क्योंकि वो दबाव में थे, उनका स्ट्राइक रेट काफी नीचे था और उस चक्कर में अच्छी गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और अपना विकेट गंवाया। तो कार्तिक शर्मा को अब थोड़ा अपने खेल को सुधारना पड़ेगा, तेज गति के साथ खेलना पड़ेगा। अगली बॉल के साथ आवेश खान, पांचवी बॉल, सामने होंगे प्रशांत वीर। इस बार गेंद को बैक टू द बॉलर खेल दिया है, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 16.5 ओवर पे चेन्नई 173 पर 5, 19 गेंदों पर चाहिए 31 रन। और इस तरह का क्रिकेट अगर दिखाई कि चेन्नई की टीम दबाव अपने ऊपर बना रही है, प्रशांत वीर, शिवम दुबे को बड़े शॉट्स लगाने चाहिए जितनी जल्दी हो सके। अभी जिस गेंद पर प्रशांत वीर ने गेंद को डिफेंड किया, ये बिल्कुल डिफेंड करने वाली गेंद नहीं थी। शॉर्ट पिच डिलीवरी अगर आ रही है तो आप उस पर सिंगल डबल्स तो ले ही सकते हैं। सीधे बल्ले से प्रशांत वीर ने एक शॉर्ट पिच डिलीवरी, आसान गेंद, बिना स्विंग वाली गेंद को सीधा बैक टू द बॉलर खेला, रोका है गेंद को, ऐसे नहीं चलने वाला है। अगली गेंद ये लीजिए, इस बार गेंद सीधा पैडों पे लगी, हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर ने दिलचस्पी नहीं दिखाई और 1 रन भाग करके पूरा किया प्रशांत वीर ने। 17 ओवर का खेल समाप्त, चेन्नई का स्कोर 174 पे 5। अब आखिरी 3 ओवर पे बनाने हैं 30 रन। देखिए दबाव अब किस टीम पर आ रहा है, धीरे धीरे चेन्नई के ऊपर आ रहा है। बड़ा शॉट शिवम दुबे को लगाना पड़ेगा। अगर आज शिवम दुबे आउट हो जाते हैं अगले 5-6 गेंदों पर, तो मुझे लगता है कि समय आ चुका है कि शिवम दुबे से परे जाए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला बना करके दिया इन्हें उर्विल पटेल ने। और देखिए स्थिति यह है कि अब 3 ओवर पे 30 रन बनाने हैं। अवेश खान 3 ओवर पे 34 रन देकर के 35 रन देकर के एक सफलता उन्हें मिली है। अच्छा, पिछली गेंद लेगवाई थी तो 34 रन आएगी उनके खाते पर, उन्होंने 34 रन दिया। और अब चलिए नए ओवर की शुरुआत, आखिरी 3 ओवर का खेल, 18 गेंदों पे 30 रन। प्रशांत वीर 3 गेंदों पे 2, शिवम दुबे 2 गेंदों पर 1। प्रशांत वीर ने हालांकि 1 रन बनाया साथियों, जो पिछला रन था वो लेग बाय के रूप में है, तो अब इनका स्कोर हो जाएगा 3 गेंदों पर 1 रन का। और ये लीजिए यहां पर मार्करम को गेंदबाजी दी जा रही है। जी नहीं, मार्करम ने गेंद तो थामा, लेकिन वापस अब गेंद प्रिंस यादव को दे दी गई है। पहले एडन मार्करम ने गेंदबाजी संभाली, लेकिन अब देखा जा रहा है कि प्रिंस यादव को गेंदबाजी दे दी जा रही है। 17 ओवर पे चेन्नई 174 पे 5, प्रिंस यादव की गेंदबाजी, स्ट्राइक पर रहेंगे प्रशांत वीर। देखिए मुकाबला फंस सकता है साथियों, मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है।
तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। 18वें ओवर की शुरुआत, प्रिंस यादव की गेंदबाजी, स्ट्राइक पर प्रशांत वीर। बिल्कुल हैदर अली जी, यहाँ पे सरफराज खान का होना जरूरी था और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग सरफराज खान को खिला क्यों नहीं रहे, जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। कार्तिक शर्मा के साथ लगातार जा रहे हैं, प्रशांत वीर के साथ जा रहे हैं, लेकिन सरफराज को क्यों नहीं मौका दिया, जिन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट दिखाया जब भी इन्हें मौका दिया गया। एक अर्धशतक भी तेजी के साथ उन्होंने लगाया था। टेक्निकली बहुत साउंड खिलाड़ी हैं और उन्हें मौका नहीं दिया गया। 17.1 ओवर पे चेन्नई 174 पे 5, 17 गेंद बाकी, जीतने के लिए चाहिए 30 रन। यहाँ पे जो आराम से खेल रहे हैं प्रशांत वीर और शिवम दुबे। अब यहाँ पे कोच फ्लेमिंग ने ही इन्हें ये नसीहत दी होगी कि आप रोक रोक करके खेलें और अंत के आखिरी ओवर पे जाएं बड़े शॉट्स के लिए, तो ऐसे में तो दबाव बढ़ेगा। एक दो आसान गेंदों को जब रोका प्रशांत वीर ने आवेश खान की, वो तो देखने लायक था ही नहीं। जिस गेंद पर आसानी से पुल शॉट लगाया जा सकता था, खराब गेंद पर भी डिफेंसिव शॉट लगाते हुए प्रशांत वीर ने गेंद को रोका था। अगर चेन्नई सुपर किंग्स इस आईपीएल के प्लेऑफ्स पे नहीं पहुंचती तो सबसे पहले अगर किसी को बाहर करना चाहिए तो वो स्टीफन फ्लेमिंग को करना चाहिए। ओवर की अगली बॉल, इस बार चलिए आखिरकार प्रशांत का बल्ला घुमा जरूर है और गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग फील्डर के ऊपर से 6 रनों के लिए। लगता है इतना जो ताना हम लोगों ने दिया उनके कानों पर चुभ गया और मार दिया उन्होंने शानदार छक्का। शाहजी ने कहा था कि 6 आएगा और बिल्कुल 6 आ गया। अच्छा 6 आ गया आपने कहा था। भाई इतना कोई ताना मारे तो क्या ना हो। घर में बीवियां क्यों ताना मारती है अपने पति को, ताकि उनका पति काम करे, और वैसे ही हमारा भी काम है ताना मारिए। तो देखिए बल्लेबाज ने छक्का लगाया। अगली बॉल, इस बार गेंद को खेला है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, थर्ड मैन की तरफ गेंद जा रही है, मिलेगा 1 रन। 17.3 ओवर पे चेन्नई 181 पर 5। ओवर की चौथी बॉल, स्ट्राइक पर रहेंगे शिवम दुबे। हमारे जितने भी श्रोता, जितने भी मित्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। यू गाइस हैज ऑलवेज बीन ऑसम। आपका प्यार हमेशा हमेशा मिला है और आशा करेंगे कि मिलता भी रहे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब। हम लोग कई सालों से क्रिकेट को इसी तरह से आपके साथ प्रस्तुत करते हैं, एक अलग ही सरल तरीके से। चलिए अगली बॉल के साथ चलेंगे। ओवर की चौथी बॉल के साथ चलेंगे प्रिंस यादव। इस बार शिवम ने गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला, 1 रन बनाने का मौका। तो अब साथियों यहां से 14 गेंदों पे चाहिए 22 रन। हमने आपको मुकाबले से पहले बताया था कि अगर चेन्नई को क्वालिफाई करना है तो इनके 4 मुकाबलों में से इन्हें 3 में जीतना पड़ेगा। अगर ये मुकाबला चेन्नई जीतती है तो उसके बाद 3 मुकाबलों में 2 में जीतना होगा, जिनमें से 1 मुकाबला लखनऊ के ही खिलाफ होगा। चलिए अगली बॉल, प्रिंस यादव की 5वीं बॉल। कई लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। प्रीति जी ने हमें लाइक और सब्सक्राइब किया, आपका नाम स्क्रीन पे लिख दिया गया है। इस बार गेंद को कवर की तरफ खेल दिया है, 1 रन बनाने का मौका नहीं। बहुत अच्छी फील्डिंग पे, कोई रन के लिए नहीं गए प्रशांत वीर। 7 गेंदों पे 9 रन बना करके ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे मित्र हैं, थैंक यू सो मच। आप सभी मित्रों का लाइक और सब्सक्राइब आप लगातार कर रहे हैं, देख करके काफी खुशी हो रही है। तो जितने भी मित्र हैं क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं, क्रिकेट अपडेट्स आपको इसी तरह सबसे तेज चाहिए सबसे पहले, तो हमें सब्सक्राइब करके रखिएगा। कई सालों से हम क्रिकेट को एक सरल तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगली बॉल, और इस बार बहुत चतुराई के साथ गेंद को थर्ड मैन की तरफ धकेला, लेकिन वहां फील्डर मौजूद, मिलेंगे बस 1 रन, मिलेगा 1 रन। और अब स्ट्राइक शिवम दुबे के पास नहीं रहेगी क्योंकि आखिरी गेंद थी, तो प्रशांत वीर के पास स्ट्राइक रहेगी। 9 रन आए ओवर से, अब आखिरी 2 ओवर का खेल बाकी है। 12 गेंदों पर चाहिए 21 रन। और वहीं दूसरे मुकाबले की क्या खबर है जल्दी से बता देते हैं आपको। यानी कि अब तक खेल की शुरुआत नहीं हो, दूसरे मुकाबले पर आपको थोड़ी ही देर में मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी देखने को मिलेगी और शुरुआत करेंगे हिटमैन रोहित शर्मा, साथ में रहेंगे रेयान रिकल्टन। कई सारे मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगली बॉल लेकर के चलेंगे अब आवेश खान।
और यहां से कुछ ओवर के लिए आपके साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर, 1 ओवर के लिए। जब उर्विल पटेल बल्लेबाजी कर रहे थे तब किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी कि 12 गेंदों में 21 रन पर आ जाएगी इक्वेशन। 2 ओवर्स में 50 बनाए गए थे, अब तो हमें 21 चाहिए। आवेश राउंड दिस टाइम से पहली बॉल, यॉर्कर का प्रयास, यॉर्कर आई है और कैच ड्रॉप किया दिग्वेश ने। एक और लेफ्ट शॉट खेला था बल्लेबाज प्रशांत वीर ने, स्कूप लगाया और गेंद को खेला सीधे शॉर्ट फाइन लेग की तरफ। शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े थे दिग्वेश सिंह राठी और कैच छोड़ बैठे एक और बार दिग्वेश। वाइड यॉर्कर की तरफ गए थे गेंदबाज आवेश, ये परफेक्ट वाइड यॉर्कर थी, लेकिन बैट थोड़ा आगे लेकर गए बल्लेबाज प्रशांत वीर। गेंद को उन्होंने गाइड किया शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ, सॉरी फाइन लेग की तरफ, और शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े दिग्वेश ने कैच छोड़ दिया। दूसरी मर्तबा कैच छोड़ा है दिग्वेश ने आज की शाम ही कहेंगे हम, क्योंकि शाम को ही छोड़े हैं कैचेस। दूसरी बॉल ओवर की, आवेश आगे की गेंद, शॉट लगाया डीप मिड विकेट की तरफ, एक और कैच ड्रॉप। विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल। पहला कैच जो छोड़ा गया था वो शिवम दुबे का था, एक्चुअली माफी चाहूंगा, और ये जो दूसरा छोड़ा गया है वो प्रशांत वीर का है। 10 गेंदों में अब 20 रनों की जरूरत। 184 पर 5 चेपॉक के मैदान पर इस समय एक सेंसेशनल मुकाबला चलता हुआ, जहां कैचेस छोड़ने की रेस में नजर आ रहे हैं टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी। दिग्वेश सिंह राठी, उन्होंने 2 कैचेस छोड़े हैं, वहीं निकोलस पुरन ने अभी 1 छोड़ा। तीसरी बॉल ओवर की, 18.2 के बाद 184 पर 5 टीम चेन्नई सुपर किंग्स। 10 गेंदों में 20 चाहिए, उल्टी गिनती गिनते हैं। ओवर द विकेट से अब गेंदबाजी करेंगे आवेश। पहली 2 गेंदें की राउंड दी स्टंप से, 2 चांसेस क्रिएट किए। उसके बाद अब अंपायर की बाईं तरफ से, यानी कि अंपायर के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे आवेश। 10 गेंदें 20 रन। ओ बड़ी वाइड, डाउन द लेग साइड ये डिलीवरी, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। क्या कर रहे हैं आवेश? एक गेंद बहुत ज्यादा मैटर करती है कभी कभी। आप राउंड द स्टंप से गेंदबाजी कर रहे थे, आपने 2 चांसेस क्रिएट किए, आप क्यों ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने आए? ये बहुत ही ज्यादा बड़ा सवाल। ओवर द विकेट से गेंदबाजी करना बैकफायर करता हुआ। मुकाबला शुरू हो चुका है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और टीम मुंबई इंडियंस के बीच में। 185 पर 5 फिलहाल ये मुकाबला हम देखते हैं। यहां मुकाबला ऐसा चल रहा है चेपॉक के मैदान पर कि हर एक दर्शक ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा है। बड़ी अपील हुई है, ये गेंद शायद से लेग स्टंप को मिस कर रही है। फुल लेंथ की बॉल थी, ऑन साइड की तरफ गेंद को मारने का प्रयास बल्लेबाज का, बॉल की लाइन को मिस करते हुए शिवम दुबे। गेंद जाकर लगी पैड पर, और गेंद पैड पर लगी मतलब कि अपील हुई थी, और अपील में अंपायर ने कहा कि ये नॉट आउट है, नॉट आउट ही रहेंगे। चलिए रिव्यू ले लिया है वहां पर कैप्टन ऋषभ पंत ने। लेना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि आगे भी ऐसे मोमेंट आएंगे जब आपको लगेगा कि रिव्यू की जरूरत है। कितने रिव्यूज बाकी है टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के पास, वो भी एक बड़ा सवाल। फुल लेंथ की बॉल ऑन साइड की तरफ खेलने का प्रयास किया गया बल्लेबाज के द्वारा, मिस किया गेंद की लाइन को बैट्समैन ने। गेंद जाकर लगी सीधे पैड पर, बड़ी अपील हुई, अंपायर ने नॉट आउट कहा, और अंपायर के डिसीजन को चैलेंज करते हुए ऋषभ पंत। ये गेंद शायद से लेग स्टंप के सामने पिच हुई है। पिचिंग बहुत ज्यादा मैटर करेगी, इंपैक्ट मेरे हिसाब से लेग स्टंप पर रहेगा, और गेंद भी लेग स्टंप पर लग सकती है। पिचिंग अगर आउटसाइड द लेग स्टंप नहीं है तो फिर आउट है ये। जहां तक बैट और बॉल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं हुआ है, मिस कर गए पूरी तरीके से बॉल को बल्लेबाज शिवम दुबे। एलएसजी के पास सिर्फ एक ही रिव्यू बाकी है। ओ पिचिंग आउटसाइड लेग, इसी की मैं बात कर रहा था, पिचिंग आउटसाइड लेग। उसके बाद हम आगे नहीं जाएंगे, रिव्यू लॉस्ट। अब टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के पास कोई रिव्यू बाकी नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स के पास अभी भी 2 रिव्यूज बाकी। बढ़िया कमबैक किया है टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने। एक मोमेंट था जब 5 ओवर में 40 रन चाहिए थे, फिर आउट हुए डेवाल ब्रेविस, फिर आउट हुए कार्तिक शर्मा। प्रशांत वीर और शिवम दुबे इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रशांत वीर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं, 10 गेंदों में 10 बनाकर खेल रहे हैं। अगली गेंद भी प्रशांत खेलेंगे। चौथी बॉल ओवर की, 9 में 18 चाहिए टीम चेन्नई सुपर किंग्स को। ऋषभ पंत फील्डिंग सेट करते हुए,
प्रशांत वीर क्या लगा पाएंगे एक बड़ा शॉट। अगली गेंद प्रशांत वीर खेलेंगे। एक मैक्सिमम थोड़ी देर पहले लगा चुके हैं प्रिंस यादव की गेंदबाजी पर। एक और अगर लगाएंगे तो मैच टीम चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ में आएगा। बॉल स्लॉट में थी, बॉल बाहर जाएगी। ये सिर्फ बॉल नहीं भेजी है, ये मैसेज भेजा है दर्शकों के पास प्रशांत वीर ने कि डरिए मत, मैं यहां खड़ा हूं। गलत गेंद आवेश की, यॉर्कर को मिस कर बैठे प्रशांत वीर विद अ क्रूशियल मैक्सिमम। क्राउड में थोड़ा सन्नाटा छा गया था, नींद खोल दी है सबकी। जितने भी दर्शक टीम चेन्नई सुपर किंग्स के फिंगर्स क्रॉस करके बैठे थे, अब कहेंगे कि यह वर्क करता है। 88 मीटर्स का छक्का, 18.4 के बाद 192 पर 5। पांचवी गेंद ओवर की। प्रशांत वीर 11 में 16 बनाकर खेल रहे हैं। तो महत्वपूर्ण छक्के लगा चुके हैं वो, बेशकीमती 12 रन 2 गेंदों से बटोर चुके हैं वो। उसके अलावा जो बाकी की नौ अंपायर को क्रॉस किया, यॉर्कर की तरफ गए, पैरों की तरफ यॉर्कर थी, डीप स्क्वायर लेग की तरफ बॉल को खेला गया। प्रिंस यादव खड़े हैं डीप स्क्वायर लेग पर। एक रन आएगा इस बॉल पर, एक रन के साथ स्कोर हो जाएगा 193। 18.5 के बाद 193 पर 5। दिलों की धड़कनें बढ़ती हुई, कौन जीतेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल। एक समय पर टीम चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ज्यादा फेवरेट्स नजर आ रही थी, हमें हर किसी की सॉलिड फेवरेट्स नजर आ रही थी टीम चेन्नई सुपर किंग्स। लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस ने तो उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वापसी कराई है गेंदबाजों ने और बहुत जबरदस्त कमबैक है ये। किस टीम की होगी जीत ये कह पाना बहुत मुश्किल। लेट्स सी हु इज गोना विन दिस गेम। ये गेंद जाती हुई फाइनल लेग की तरफ जहां पर खड़े हैं दिग्वेश। कुछ सजा सी दी गई है दिग्वेश को और कहा गया है कि जाइए फाइनल लेग पर लगिए जाकर। सर्कल के बाहर लगे हुए हैं दिग्वेश। एक रन आएगा इस बॉल पर, आखिरी 6 गेंदों में 10 की जरूरत। बहुत ही गजब का शॉट लगाया प्रशांत वीर ने। जो मैक्सिमम आया है इस ओवर में, उस मैक्सिमम ने इस मैच का रोमांच और ज्यादा बनाए रखा है। आप सभी दर्शकों से गुजारिश रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो अगले मैच और आने वाले सभी मैचेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर लीजिए। आखिरी 6 गेंदें 10 रन और आखिरी ओवर करने के लिए एक ऑफ ब्रेक गेंदबाज को बुलाया है कप्तान ऋषभ पंत ने। दिस इज अ बिग मोमेंट इन द गेम। अब तक गेंदबाजी नहीं की है इस मुकाबले में एडन मार्करम ने। एक तुरुप के इक्के से आखिरी ओवर कराने का फैसला लिया है ऋषभ पंत ने। 6 गेंदें 10 रन। शिवम दुबे ऑन स्ट्राइक, 5 में 3 बनाकर खेल रहे हैं। पहली बॉल ओवर की। चेन्नई के फैंस में इस समय थोड़ा डर का माहौल, खौफ का माहौल, नर्वस है हर कोई। पहली गेंद ओवर द विकेट से, अरे एडन मार्करम वाइड लाइन पर गेंदबाजी करेंगे, वो उन्होंने पहली गेंद पर ही दिखा दिया है। ये गेंद तो वाइड लाइन से काफी ज्यादा बाहर वाइड दी गई है ये अंपायर के द्वारा। अब चाहिए 6 में 9। 1 रन तो एडन मार्करम ने बना दिया टीम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। अगली बॉल ओवर की। एडन मार्करम ओवर द विकेट से, सामने शिवम दुबे। वाइड लाइन पर यह गेंद, क्या ये वाइड है? अंपायर ने वाइड दी है। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास रिव्यू नहीं है। यह मामला बहुत करीबी, ये लग नहीं रही थी वाइड। वाइड दी गई अंपायर के द्वारा। एडन मार्करम ने कहा रिव्यू ले लेते हैं, ऋषभ पंत कहते हुए कि रिव्यू है ही नहीं भाई साहब। 6 में 8। शिवम दुबे स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। बड़ा शॉट लगाया गया है खड़े खड़े शिवम दुबे के द्वारा। ऋषभ पंत आपने जो ये किया है आखिरी ओवर में, इट्स वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट कि आपने क्यों एक स्पिनर को ओवर दिया। क्या कोई मीडियम पेसर था ही नहीं टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के पास। 6 लगाया है शिवम दुबे ने इस बॉल पर और इस 6 के साथ टीम चेन्नई सुपर किंग्स 200 पार, 202 पर 5। अगला मुकाबला भी आप लोग जरूर इस चैनल पर देखिए, बहुत मजा आने वाला है। अगला मैच है आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस। गेंद एक बार फिर से हवा में और इस बार गेंद स्टैंड्स में एक और मर्तबा। स्पिनर से आखिरी ओवर कराने का फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ। 6 में 10 चाहिए थे और सिर्फ 2 गेंदें लिए शिवम दुबे ने यह मैच समाप्त करने के लिए।
He is a designated spin hitter of team Chennai Super Kings. स्पिनर्स के सामने ये खिलाड़ी एक दानव बन जाता है। रनों की भूख बढ़ जाती है इस खिलाड़ी में जब स्पिनर्स को ये देखता है। छक्के के साथ मैच समाप्त किया शिवम दुबे ने। बट व्हाट अ मैच वी हैव विटनेस मैन। उर्विल पटेल का तूफानी अर्धशतक, उससे पहले हमने देखी जॉश इंग्लिश की पारी। शाहबाज ने आज बढ़िया बल्लेबाजी की। आखिरी ओवर में जो फैसला लिया कप्तान ने, मेरे हिसाब से थोड़ा गलत साबित हुआ। एक बार नजर डालते हैं इस चीज पर कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन ऋषभ पंत के पास कोई विकल्प नहीं था। देखिए, आपने अपने 5 गेंदबाज तो रख रखे होंगे। ओवर अगर 19 हुए हैं तो आपके किसी एक मेन बॉलर का ओवर बाकी होगा। अगर हम देखें वहां पर ओवर्स, तो दिग्वेश के 4 ओवर्स पूरे हुए, शाहबाज का 1 ओवर बाकी था। वी ऑल नो कि चलिए ठीक है, एक बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने बाएं हाथ के स्पिनर को लाना बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन आप चाहेंगे कि आपके फ्रंट लाइन गेंदबाज गेंदबाजी करें। एडन मार्करम को लेकर आए ऋषभ पंत और 2 गेंदों में मैच समाप्त हो गया। कांग्रेचुलेशंस टीम चेन्नई सुपर किंग्स। यहां से आपके साथ जुड़ेंगे केएम पंत सर। सर, स्वागत है आपका। तो चलिए, बहुत ही शानदार मुकाबला, नेल बाइटिंग मुकाबला था और अंत में जीत चेन्नई सुपर किंग्स की हुई। तो चलिए साथियों, अब सीधा रुख करते हैं आज के दूसरे मुकाबले की, जो कि है आरसीबी और एमआई के बीच। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी जारी हो चुकी है और देखना है कि आज मुंबई किस प्रकार से खेल को आगे बढ़ाने वाली है। टॉस जीता था आरसीबी ने, उन्होंने चुनी है गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं इस वक्त मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा और उनके साथ है रियान रिकल्टन। और साथियों, रियान रिकल्टन का विकेट भी गिर चुका है, लेकिन रोहित शर्मा यहां बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी रोहित शर्मा की। 8 गेंदों पे 18 पर ये पहुंच चुके हैं। 2 ओवर पे मुंबई का स्कोर 22 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं, आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक अगर आपने अब तक नहीं कर रखा हो, और साथ में ही मुकाबले का लुत्फ उठाइएगा। भुवनेश्वर कुमार, पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। आज साथियों, पहला मुकाबला क्या कमाल का रहा, जहां पर धागा खोल दिया था उर्विल पटेल ने। उर्विल पटेल ने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक अभी पूरा किया है। बहुत मजेदार खेल देखने को मिला और उम्मीद करेंगे कि आप सभी मित्रों ने उस मुकाबले का भी अच्छा खासा लुत्फ उठाया होगा हमारे चैनल पर। फिलहाल दूसरा मुकाबला आज का जारी है, जहां पर हमने देखा रियान रिकल्टन के आउट होने के बाद अब नमन धीर और रोहित शर्मा इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। रोहित शर्मा ने पिछले ओवर की लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के जड़े थे। स्ट्राइक पर नमन धीर आ चुके हैं, सामना करेंगे भुवनेश्वर कुमार का। ओवर की पहली गेंद, इस गेंद से कोई रन नहीं आता। हमारे साथ जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज झलक मिल गई साथियों, जो पिछला मुकाबला हमने देखा चेन्नई सुपर किंग्स का, उससे ये तो पता चल गया कि आने वाले दिनों में जो मुकाबले होंगे बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। ओवर द विकेट से भुवनेश्वर कुमार इस बार हल्के हाथों का प्रयोग करते हुए गेंद को कवर की तरफ खेला है। रन बनाने का कोई मौका नहीं। 2.2 ओवर पे मुंबई का स्कोर 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आज भी हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे और उनकी अनुपस्थिति पे आज भी कप्तानी सूर्य कुमार यादव ही कर रहे हैं। इस ओवर के बाद आपको दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 भी दिखा देंगे। तो आज चेन्नई ने इस मुकाबले को जीत लिया, पिछले मुकाबले को, और 2 अंक बटोर पाने में वो कामयाब हो गए हैं। अगली बॉल इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, नमन धीर ने गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेला है, लेकिन वहां पर जोश हेजलवुड मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका नहीं। चलिए अगली बॉल लेकर के चलते हुए दिखेंगे हमें एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार, सामना करेंगे इनका रोहित शर्मा। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अगली गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया है थर्ड मैन के क्षेत्र पर और ये लीजिए। रोज जॉब्स अप्लाई कर रहा हूँ, एक भी इंटरव्यू कॉल नहीं आया। भाई मैनुअली अप्लाई मत कर, यूज लीको एआई। ये तेरी स्किल्स के हिसाब से सारे बड़े जॉब बोर्ड्स पे जॉब्स ढूंढता है और रेज्यूमे को पॉलिश करता है। तुझे बस व्हाट्सएप पे अप्रूव करना है, लीको बाकी सारी डिटेल्स फिल करके अप्लाई कर देगा और साथ ही उस कंपनी के करंट एम्प्लॉइज से रेफरल्स भी दिला देगा। पर इतने सारे जॉब पोर्टल्स पे एप्लीकेशंस ट्रैक कैसे करूंगा? अलग अलग पोर्टल्स चेक नहीं करने, सब कुछ एक ही जगह ट्रैक हो जाता है लीको के डैशबोर्ड पे। तो अब दिन भर अप्लाई मत कर, लीको को काम करने दे। आज ही 1 मंथ फ्री ट्रायल स्टार्ट कर। Everyone's prompting, not everyone's getting great results. Here are 3 things the most AI savvy people I know do differently. First, go into your Claude settings and add this custom instruction. Always critique your own answer after giving it. LLMs are notorious for telling you what you want to hear. This one change means you always get the full picture. Second, stop typing your prompts. Use Whisperflow to dictate them instead. In 20 seconds of talking, you'll give more detail, more context, and more nuance than you'd ever type out. Better input, way better output. Reid Hoffman, Mark Andreessen, some of the most prolific thinkers in tech swear by this. Third, end any prompt with, before you answer, ask me any clarifying questions you need. With this instruction, ChatGPT will ask questions to get you the best possible output. When you speak your answers back with Whisperflow, the response you get after that is on a completely different level. You could use ChatGPT or Claude's built-in voice, but Flow is way faster, more accurate, and works everywhere you speak. Upgrade your prompting today and check out Whisperflow free. में भुवनेश्वर कुमार ने ले लिया और अब सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में ये वापस नंबर 1 पे पहुंच गए होंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था अंशुल कंबोज ने पर्पल कैप धारण किया, लेकिन आज अब इस मुकाबले के बाद भुवनेश्वर कुमार आपको पर्पल कैप में दिखेंगे। अगली गेंद, बल्ले का किनारा और आउट। बड़ा झटका, भुवनेश्वर कुमार ने रोहित शर्मा को किया चलता। ये बहुत बड़ा झटका है मुंबई इंडियंस के लिए। रोहित शर्मा 10 गेंदों पर 22 रन बना करके अपना बल्ले का किनारा दे बैठे। भुवनेश्वर कुमार की लगातार शानदार गेंदबाजी जारी है। बहुत खूबसूरत डिलीवरी, कवर की तरफ खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले के किनारे को लगी और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की इस कैच को पकड़ने में। बहुत बढ़िया डाइविंग कैच और आउट होकर के जाना पड़ेगा हिटमैन रोहित शर्मा को। विराट कोहली काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, पर होंगे भी क्यों नहीं, उन्हें पता है कि सबसे बड़ा खिलाड़ी मुंबई का वो आउट हो चुका है। तो साथियों, आप बताइएगा कि आज आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आरसीबी को या फिर एमआई को। फिलहाल अब मुंबई इंडियंस के कप्तान सूर्य कुमार यादव आए हैं रोहित शर्मा के स्थान पर बल्लेबाजी करने। साथ देंगे नमनधीर का। आपको जल्दी से प्लेइंग 11 दिखा देते हैं दोनों ही टीमों की। मुंबई की तरफ से खेल रहे हैं रियान रिकल्टन, रोहित शर्मा, दोनों आउट हो चुके हैं। आगे है नमनधीर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, विल जैक्स, राज अंगद बावा, कॉर्बिन बॉश। और वहीं अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने भी अपनी प्लेइंग 11 पे कोई बदलाव नहीं किया। उन्हीं खिलाड़ियों के साथ आज उतरी है जिनके साथ इन्होंने अपना पिछला मुकाबला खेला था। चलिए, फिलहाल भुवनेश्वर कुमार लौटेंगे अपने अगली बॉल के साथ। सामने होंगे सूर्य कुमार यादव। तो आप भी बताइएगा कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। कई सारे लोग आरसीबी का नाम, तो कई सारे लोग मुंबई इंडियंस का भी नाम ले रहे हैं। कई सारे मित्र जो भी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अगली बॉल आ रही है। भुवनेश्वर कुमार लौटेंगे अपने अंतिम बॉल के साथ। सामने सूर्य कुमार यादव। इस बार बल्ले का किनारा और आउट। ये क्या किया सूर्या ने, आए और गए।
बेहद खराब बल्लेबाजी चल रही है सूर्य कुमार यादव की। शानदार गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार की। 2 गेंदों पर 2 विकेट्स, पहले रोहित शर्मा और अब सूर्य कुमार यादव को भी चलता कर दिया है। सूर्य कुमार यादव का बेहद खराब फॉर्म अभी भी जारी। मुश्किल में मुंबई इंडियंस की टीम। आरसीबी इज ऑन ड्राइविंग सीट। ये लीजिए, पूरी तरह से अब मुश्किल में दिख रही है मुंबई इंडियंस की टीम। 3 ओवर पे मुंबई का स्कोर 28, 3 विकेटों के नुकसान पर। क्या होगा साथियों, अगर ऐसी ही बल्लेबाजी चलेगी तो फिर मुंबई की टीम कहीं ऐसा ना हो कि 100 रन पर ही ढेर हो जाए। तीन ओवर पे मुंबई 28 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। और अब तिलक वर्मा आएंगे सूर्य कुमार यादव के स्थान पर। भुवनेश्वर कुमार हैट्रिक में रहेंगे जब वो अपने अगले ओवर पर पहली गेंद डालेंगे। 2 ओवर की गेंदबाजी की, 10 रन दिए, 3 विकेट्स, पर्पल कैप वापस से भुवनेश्वर कुमार के नाम। और जिस तरह से ये क्रिकेट दिखा रहे हैं, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि इन्हें भारतीय टीम में शामिल कर देना चाहिए? तीन ओवर पे मुंबई इंडियंस का स्कोर 28 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। जॉश हेजलवुड को बुलाया गया है इनके दूसरे ओवर के लिए। इनके सामने रहेंगे नमनधीर। चले ओवर द विकेट से इस बार गेंद को खेला है पॉइंट की तरफ। अच्छी फील्डिंग, पॉइंट पे खड़े टीम डेविड के द्वारा रन बनाने का कोई मौका नहीं। 3.1 ओवर पे मुंबई 28, 3 विकेट्स के नुकसान पर। साथियों, आज का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का तो आखिरी ओवर पे गया और बीच में ऐसा लगा कि लखनऊ बाजी मार जाएगी, लेकिन अंत में 2 छक्के लगाने के साथ शिवम दुबे ने यह सुनिश्चित किया कि चेन्नई के क्वालिफाई होने का जो सिनारियो है वो बना रहे। अगली बॉल इस बार हल्के हाथों से फ्रंट फुट पे आकर के गेंद को रोका है। यहां से कोई रन बनाने का मौका नहीं। 3.1 ओवर के बाद मुंबई 28, 3 विकेटों के नुकसान पर। दूसरी बॉल आने वाली है जॉश हेजलवुड की तरफ से। सामने होंगे नमनधीर। सभी दर्शकों का, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं कर रखा हो। तो ये मुकाबला जारी है आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच का। इस बार इस गेंद को पॉइंट की तरफ खेलते हुए दिखे थे नमनधीर, हालांकि फील्डर होने की वजह से एक ही रन मिल पाएगा। 3.3 ओवर पे मुंबई 29, 3 विकेटों के नुकसान पर। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। ये है आज के दिन का दूसरा मुकाबला। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुआ, जहां पर आखिरी ओवर पे आकर के चेन्नई ने जीत दर्ज की। और आज चेन्नई की तरफ से उर्विल पटेल ने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया और वह यशस्वी जायसवाल के साथ संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले आईपीएल के खिलाड़ी बन चुके हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार अपना प्यार दे रहे हैं, लगातार अपना साथ दे रहे हैं। तो अभी भी साथियों हार्दिक पांड्या पूरी तरह से चोट से उभरे नहीं है। उनकी अनुपस्थिति पे आज भी टॉस करने के लिए कप्तानी कर रहे हैं आज भी सूर्य कुमार यादव। और सूर्य कुमार यादव के लिए दिन बेहद निराशाजनक रहा। सूर्य कुमार यादव आज पहली ही गेंद पर आउट हो गए हैं और ये चर्चा भी काफी तेजी से आ रही है, इस बात की चर्चा कि शायद सूर्य कुमार यादव को अब भारतीय टीम की कप्तानी से भी हटा दिया जाएगा और किसी युवा खिलाड़ी को अब यह जिम्मेदारी दी जाएगी।
इसी बीच अगली बॉल, गेंद को उठा दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से, एक टप्पे के बाद गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। शानदार चौका नमन धीर का। दुनिया हिला देंगे हम, 3.5 ओवर के बाद मुंबई 34 3 विकेटों के नुकसान पर। सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पहले 500 लाइक्स पर पहुंचते ही आपकी पसंदीदा धुन भी बजा दी जाएगी और उसके बाद आपको पहचानना है कि ये धुन कौन सी है, लेकिन पहले 500 लाइक्स पूरे होने पड़ेंगे। चलिए अगली गेंद के साथ चलेंगे। है जरूर ओवर की आखिरी बॉल। इस बार हल्के हाथों का प्रयोग किया, गेंद गई है पॉइंट की तरफ जहां पे खड़े फील्डर ने गेंद को पकड़ा। अंतिम गेंद से रन नहीं, तो 4 ओवर की समाप्ति पे मुंबई 34 पे 3। और अब देखना अगले ओवर पे क्या एक बार फिर से बुलाया जाएगा भुवनेश्वर कुमार को। ही इज ऑन हैट्रिक। भुवनेश्वर कुमार अगर अपने अगले ओवर की पहली गेंद पर विकेट ले लेते तो वो हैट्रिक पूरा कर जाएंगे। उन्होंने अपने पिछले ओवर की लगातार आखिरी 2 गेंदों पे 2 विकेट्स लिया। पहले उन्होंने आउट किया रोहित शर्मा को और अगली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव को। 5वें ओवर की शुरुआत और जी हां, भुवनेश्वर कुमार आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। तो भुवनेश्वर कुमार रहेंगे ऑन हैट्रिक। देखते हैं क्या आज इस आईपीएल का पहला हैट्रिक हमें देखने को मिलेगा। भुवनेश्वर कुमार, तीसरे ओवर की पहली बॉल, सामने होंगे तिलक वर्मा। ही इज ऑन हैट्रिक। अगर हैट्रिक लेते हैं तो कमाल कर जाएंगे। क्या लग रहा साथियों, हैट्रिक मिलेगा हां या ना, जरूर बताइएगा चैट पे। चले ओवर द विकेट से भुवनेश्वर, राउंड द विकेट से इस बार क्या बल्ले का किनारा लगा। हल्की सी अपील, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि जी नहीं, उन्होंने आवाज नहीं सुनी। जितेश शर्मा थोड़ी दिलचस्पी दिखा रहे थे लेकिन बच गए बाल। तिलक वर्मा बल्ले का किनारा लगते लगते रह गया। साथियों लाइक की संख्या को बढ़ाने में हमारी मदद करें। फिलहाल लाइक की संख्या कितनी हुई जरा देख। ओहो 962 हो गए हैं। इसी बात पे बजा देते हैं आपके लिए नई वाली धुन और अब बताइएगा ये धुन कौन सी है। चलिए देखते हैं अब यहां पर कितने मित्र इस धुन का पता लगा सकते हैं। बहुत ही क्लासिक यह धुन है। 4.2 ओवर पे मुंबई 34 पर 3। 1000 लाइक्स देने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब अगली बॉल के साथ चलेंगे भुवनेश्वर कुमार। कोई भी नहीं बता पाया। जी हां, बता दिया है कृष्णा जी ने, किशन कुमार जी ने। क्या बात है, बहुत सही। किशन कुमार जी ने सबसे पहले ये किया। चलिए कई मित्र कह रहे कि धुन अच्छी नहीं लगी। चलिए धीरे धीरे ऐसी धुन को बदलते रहेंगे एक तरह से। निम्बा जी ने भी सही कहा, आशिकी की धुन थी ये, बहुत पुरानी क्लासिक मूवी। आजकल राहुल रॉय भी काफी ट्रेंड्स में है, इस वजह से हमने वो धुन मुझे मिली तो सोचा चलो बजा देते हैं। एक मित्र कह रहे सैमसंग की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। ओहो, सांसों की जरूरत है को उन्होंने अभी संजू सैमसन का खेल देखा था लगता आपने, इसीलिए इसी वजह से आपने कहा। चलिए अगली बॉल, इस बार मिड ऑन की तरफ गेंद को खेल दिया है। मिलेगा 1 रन तिलक वर्मा के द्वारा। 4.4 ओवर पे मुंबई 37 पर 3। नेपाली सॉन्ग भी जरूर बजाएंगे जल्द ही जब नेपाल का मुकाबला होगा। 4.4 ओवर में मुंबई का स्कोर है 37 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी पे भुवनेश्वर कुमार, बल्लेबाजी पे नमन धीर। आ रही है ओवर की 5वीं बॉल। चलिए अगली गेंद के साथ भुवनेश्वर कुमार ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर। गेंद को कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच से खेल दिया है। क्या बॉल जाएगी 4 रन के लिए। जी हां, बहुत ही शानदार चौका नमन धीर के बल्ले से आता हुआ। दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला देंगे हम। आरसीबी और मुंबई की टीम इससे पहले भी आमने सामने भिड़ी थी और एक बार फिर से दोनों का आमना सामना इस आईपीएल पे दूसरी बार हो रहा है। यहां पे आरसीबी को हर हाल में मुकाबले को जीतने की जरूरत है।
पे आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। मुंबई का स्कोर 41 रन हुआ है 3 विकेट्स के नुकसान पर। हमारे जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करके सब्सक्राइब भी जरूर करें अगर आपने अब तक नहीं कर रखा हो। यह है आईपीएल का मुकाबला नंबर 54। हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति पे आज भी कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं सूर्य कुमार यादव। तो प्लेऑफ्स की रेस अब बढ़ चुकी है और धीरे धीरे जो मुकाबले हैं वो ऐसे ही रोमांचक होते जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि हर एक मुकाबले पर आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चलिए यहां पर अब नए ओवर की शुरुआत होने वाली है। अगली गेंद की शुरुआत होने वाली है और ये नए युवा बल्लेबाज रसिकधर सलाम को दी जा रही है। कई सारे मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। अगली बॉल लेकर के चले रसिकधर सलाम। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को कवर की तरफ खेल दिया। फील्डर वहां पे मौजूद है और यहां पर मिस फील्डिंग कर बैठे। नतीजा चौके के रूप में रोमारियो शेफर्ड से हो गई है चूक और जहां पर 1 रन मिलते वहां चौका पड़ गया है। 5.1 ओवर के बाद मुंबई 45 पर 3। अगली बॉल लेकर के चलेंगे रसिकधर सलाम। सामना करने के लिए तैयार तिलक वर्मा। इस बार पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पे गए, गेंद को स्क्वायर की तरफ हल्के हाथों से खेला है। फील्डर मौजूद, 1 रन बनाने का मौका। तो आज सूर्य कुमार यादव के लिए दिन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। पहली गेंद पर वो आउट हो गए थे। तो सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। यह मुकाबला है 54वां मुकाबला जहां टॉस जीता था आरसीबी ने। उन्होंने टॉस जीत करके चुनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने अब तक 5.2 ओवर पर बना दिए हैं 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मुंबई की तरफ से पारी की शुरुआत की रेयान रिकल्टन ने, साथ में थे रोहित शर्मा। रेयान रिकल्टन मात्र 2 रन बना करके आउट हुए। रोहित शर्मा 22 रन बना करके और सूर्य कुमार यादव पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे। इस वक्त क्रीज पर नमन धीर और तिलक वर्मा है, दोनों 9 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी पर रसिकधर सलाम। अगली गेंद लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद, फाइल की तरफ इस गेंद को खेला और मिलेगा चौका। बहुत शानदार टाइमिंग, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट नमन धीर के बल्ले से बॉल को भेजा है 4 रन बाउंड्री के लिए और इन 4 रनों के साथ मुंबई ने अपने 50 रन भी पूरे कर दिए। 5.3 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 50, 3 विकेटों के नुकसान पर। साथियों आप बताइएगा कि आज आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, मुंबई को या फिर बेंगलुरु को। जितने लोग मुंबई इंडियंस को सपोर्ट कर रहे हैं चैट पे एमआई लिख सकते हैं और जितने लोग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को सपोर्ट कर रहे हैं आप चैट पे आरसीबी लिखिएगा। हमारे साथ स्पीड जुड़ चुके हैं जो कि आरसीबी लिख रहे हैं, कई लोग एमआई भी लिख रहे हैं। अगली बॉल इस बार लॉफ्टेड शॉट, स्क्वायर की तरफ मिलेगा 1 रन। सिराज जी ने कहा है एमआई, वहीं राहुल जी कह रहे हैं आरसीबी, नवदीप कह रहे हैं सीएसके का मुकाबला तो हो गया है। सीएसके ने वैसे बहुत शानदार जीत दर्ज की। आज उर्विल पटेल ने तो धागा खोल दिया, 13 गेंदों पे अर्धशतक बनाया उन्होंने। चलिए अब गेंदबाजी पर चलेंगे एक बार फिर से रसिकधर सलाम। सामने होंगे तिलक वर्मा। कई लोग अपनी अपनी फेवरेट टीम का नाम ले रहे हैं, कुछ कह रहे हैं वो आरसीबी को सपोर्ट करेंगे तो कुछ कह रहे हैं कि जी नहीं वो मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करेंगे। अगली गेंद लेकर के चले एक बार फिर से तेज गेंदबाज रसिकधर सलाम। सामना करने के लिए तैयार तिलक वर्मा। इस बार गेंद हवा पे और क्या कैच ड्रॉप कर दिया, कैच ड्रॉप कर दिया है सुयश शर्मा ने। तो रसिकधर सलाम लगातार सुयश शर्मा को घूर रहे हैं और कह रहे हैं ये लीजिए। पिछले मुकाबले पे भी कई बार फह हो गया और इस बार भी वैसा ही हो गया। बिल्कुल हाथों पे आई कैच को सुयश शर्मा नहीं पकड़ पाए। रसिकधर सलाम गुस्से से आग बबूला होते हुए नजर आए।
5.5 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 53, 3 विकेट्स के नुकसान पर। अगली गेंद रसिक सलाम की। इस बार बहुत परेशान किया जा रहा है आरसीबी के गेंदबाजों के द्वारा। भले इस ओवर पे 12 रन आए, लेकिन रसिक सलाम ने बहुत शानदार गेंदबाजी की। तो 6 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। मुंबई का स्कोर 53, 3 विकेट्स के नुकसान पर। और यहां से कुछ ओवर के लिए जुड़ेंगे आपके साथ हमारे साथी कमेंटेटर। भुवनेश्वर कुमार इतने समय के बाद अगर एक बार फिर से भारतीय जर्सी में आपको दिख जाए तो चौंकिएगा मत। क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं वो। भुवनेश्वर कुमार, उन्होंने 3 विकेट्स निकाल लिए और पर्पल कैप लीडर बोर्ड अब उनके सिर पर आपको देखने को पर्पल कैप उनके सिर पर आपको देखने को मिलेगी और पर्पल कैप लीडर बोर्ड में वो टॉप पर आपको देखने को मिलेंगे। पारी का जो 6वां ओवर रहा वहां पर 12 रन आए। रसिक सलाम चार, वो अपना पहला ओवर करने आए और उन्होंने दिए 12 रन। 6 ओवर्स में बनाए टीम मुंबई इंडियंस ने 53 रन। अगर रनों की बात करें हम तो वो बहुत ज्यादा कम नहीं, लेकिन विकेट की संख्या थोड़ी सी ज्यादा। पावर प्ले में अगर 2-3 विकेट्स किसी गेंदबाजी करने वाली टीम को मिल जाते हैं तो गेंदबाजों का मनोबल बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है और उनके साथ साथ कप्तान का भी मनोबल बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और एक बार फिर से गेंदबाजों ने उनके निर्णय को सही साबित किया। शेफर्ड गेंदबाजी पर आए ओवर द विकेट से। गेंद गुड लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर खेल दिया गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ। बल्लेबाज नमन धीर ने 1 रन आया इस बॉल पर। नमन धीर और तिलक वर्मा की जोड़ी इस समय आपको देखने को मिलेगी विकेट पर। 54 पहुंच चुका है स्कोर मुंबई इंडियंस का। रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अक्षय जी का बहुत बहुत स्वागत, संदीप जी भी हैं, वीरेंद्र चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुबाइदा शेख, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। पावर प्ले बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा टीम मुंबई इंडियंस के लिए। 3 विकेट्स गंवाए उन्होंने, रन्स भी बना लिए वैसे 50 से ज्यादा। वैसे ये विकेट है बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छी। 7वें ओवर की दूसरी बॉल, रोमारियो शेफर्ड ओवर द विकेट से। सामने तिलक वर्मा, तेज गेंदबाजों के लिए जो मदद मौजूद है विकेट पर, उस मदद का फायदा उठाना चाहते हैं कप्तान रजत पाटीदार और उसी वजह से शेफर्ड को लेकर आए पारी के 7वें ओवर के लिए। बढ़िया गेंद थी अंदर की तरफ आती हुई, बैट का फेस थोड़ा जल्दी बंद कर बैठे तिलक वर्मा। एक लीडिंग एज लगा और लीडिंग एज के बाद जो गेंद गिरी वो रोमारियो शेफर्ड से थोड़ा सा आगे, बाल बचे तिलक वर्मा। आशु गेमर कह रहे हैं कि आरसीबी एमआई दोनों को सपोर्ट करता हूं मैं। देखिए जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैन है वो तो आज एक कश्मकश में फंसे होंगे कि किसको मैं सपोर्ट करूं। क्या कमाल की गेंदबाजी की है आज भुवनेश्वर कुमार ने। नकल बॉल्स में भी उन्होंने विकेट्स निकाले हैं। नकल बॉल का इस्तेमाल बहुत कम हमें देखने को मिलता है उन गेंदबाजों की तरफ से जो नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज भुवनेश्वर कुमार ने नकल बॉल का इस्तेमाल किया और रोहित शर्मा को आउट किया। ही इज अ लीजेंड भुवनेश्वर कुमार। रोमारियो शेफर्ड की अगली गेंद अंदर की तरफ आती हुई, गेंद को खेला गया मिड ऑफ की तरफ। बहुत अच्छा प्रयास कवर्स के खिलाड़ी का, गेंद को नहीं रोक पाए वो, लेकिन मिड ऑफ के खिलाड़ी बॉल को रोकेंगे और इस बॉल पर कोई भी रन नहीं। गुंजन कुमारी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है और वो 6 की मांग कर रही हैं। खुशी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो कहती हुई कि आरसीबी जीतेगी। हमारे साथ गौतम सागर भी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मनोज कुमार जी हैं, अजय गुप्ता जी हैं, मनीष वर्मा स्टाइल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। रिमपाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं डब्लू वर्मा जी भी। अगली बॉल पटकी हुई गई शरीर की तरफ, यहां पर कैच का मौका, लेकिन जितेश शर्मा बॉल के नीचे नहीं आ पाए। फुल शॉट लगाने का प्रयास किया तिलक वर्मा ने, गेंद लगी बल्लेबाज के ग्लव पर, गई ऊपर और रोमारियो शेफर्ड उनकी इस गेंद पर फंस गए थे बल्लेबाज लगभग तिलक वर्मा। जितेश शर्मा ने अपनी दाईं तरफ दौड़ लगाई और गेंद के नीचे आने का प्रयास किया, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में इतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ था कि जितेश शर्मा तक बॉल कैरी कर जाए। बहुत अच्छा ओवर अब तक रोमारियो शेफर्ड का ही है। मात्र 2 रन आए हैं पहली 4 गेंदों में। ओवर की 5वीं गेंद, सामने नमन धीर 13 में 15 बनाकर खेल रहे हैं। ये गेंद बैक ऑफ लेंथ आउटसाइड द ऑफ स्टंप, पॉइंट की तरफ खेला गया। गेंद को पॉइंट पर खड़े विराट कोहली अपनी दाईं तरफ दौड़ी, गेंद को पिक किया, थ्रो किया बॉलर्स एंड के स्टंप्स की तरफ और स्टंप पर नहीं लगी गेंद। 1 रन इस बॉल पर पूरा किया जाएगा। 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 56, 3 विकेट के नुकसान पर। 6.5 के बाद स्कोर 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 8.20 का रन रेट हमें देखने को मिल रहा है।
रन रेट बहुत ज्यादा खराब नहीं, लेकिन मुंबई इंडियंस की जो पोजीशन है पॉइंट्स टेबल में वो तो उनसे देखी नहीं जा रही होगी। 9वें स्थान पर है 5 टाइम्स चैंपियन मुंबई इंडियंस, लेकिन अभी भी मौका है प्लेऑफ्स में पहुंचने का। अंतिम बॉल ओवर की राउंड द स्टंप से एक बार फिर से अंदर की तरफ आई है बॉल, शरीर की तरफ ड्रिफ्ट करती हुई गेंद। तिलक वर्मा ने थोड़ा सा शफल किया और गेंद को ऑनसाइड की तरफ मारने की कोशिश की। अंपायर के फैसले का हम इंतजार करेंगे। क्या ये गेंद बल्लेबाज की थाई पर लगी है या फिर बैट पर लगी है? अब तक तो कोई सिग्नल आया नहीं है, यानी कि आखिरी बॉल पर आया बैट से 1 रन। 7 ओवर्स के बाद 57 पर 3 टीम मुंबई इंडियंस। रशर कह रहे हैं आरसीबी जीतने वाली है। शिवांश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो शिवांश जी, कैसे हैं आप? ज्योति जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। धीरेन्द्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुशी रिजवी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अंकित कुमार है। रामेश्वर जी कह रहे हैं बढ़िया कमेंट्री, थैंक यू सो मच रामेश्वर जी। पारी के 8वें ओवर की शुरुआत होने वाली है। गेंदबाजी पर आएंगे कृणाल पांड्या। पिछला मुकाबला जो जीता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, वहां पर कृणाल पांड्या ने कैच लिया था। कैच लिया था या रन्स बनाए थे? आई थिंक रन्स बनाए थे। चलिए अब हम देखेंगे पारी के 8वें ओवर का खेल। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने जीत अर्जित की थी अगेंस्ट आरसीबी। शाहबाज अहमद ने गेंदबाजी की थी। दोनों ही बाएं हाथ के स्पिनर है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। शाहबाज अहमद ने बढ़िया गेंदबाजी की थी। टिम डेविड का कैच गया था पॉइंट पर और वो एक फील्डर के द्वारा लिया गया था। कृणाल पांड्या ने बहुत कोशिश की, लेकिन मुकाबला जीता टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने। 8वें ओवर की शुरुआत। राउंड द स्टंप से गेंद शफल किया, बल्लेबाज ने ऑनसाइड की तरफ गेंद को हल्के हाथों से खेला है। टीम से खिलाड़ी दौड़कर आएंगे, शॉर्ट फाइन लेग से खिलाड़ी दौड़कर पहुंचेंगे और जब तक गेंद को पिक करेंगे शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर, तब तक 2 रन कंप्लीट कर चुके होंगे नमनधीर और तिलक वर्मा। बढ़िया रनिंग बिटवीन द स्टंप्स। मुंबई कैप्टन रोहित शर्मा वेरी गुड, ये कहते हुए ईश्वर जी, लेकिन मुंबई के कैप्टन रोहित शर्मा नहीं है, सूर्य कुमार यादव है संभवतः कैप्टन। एक बार मैं भी जरा कंफर्म कर लेता हूं, सूर्य कुमार यादव ही है, क्योंकि चेंज हुआ है कैप्टनसी में। हार्दिक पांड्या थोड़े इंजर्ड है, जिस वजह से सूर्य कुमार यादव अब कैप्टनसी कर रहे हैं। ओ इस बार ये क्या देखने को मिल गया हमें? डीप मिड विकेट की तरफ बॉल गई थी, 1 रन कंप्लीट किया बहुत आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने, और बॉल को थ्रो किया विराट कोहली ने डीप मिड विकेट से, और गेंद लग गई स्ट्राइकिंग एंड के स्टंप्स पर बॉल लगी और उसी के चलते ओवर थ्रो के रूप में 1 रन मिल गया। यानी कि पिछली 2 गेंदों में आ गए हैं 4 रन। 2-2 करके 4 बना लिए हैं पहली 2 गेंदों में इस ओवर में तिलक वर्मा ने। बाएं हाथ के स्पिनर, उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज। क्या तिलक वर्मा अपने हाथ खोलेंगे? क्या अपनी बाजुओं की ताकत दिखाएंगे? कृणाल पांड्या की तीसरी बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल थी, खेल दिया गेंद को पॉइंट की तरफ तिलक वर्मा ने। पॉइंट के फील्डर अलाउ नहीं करेंगे 1 रन के लिए तिलक वर्मा और नमनधीर को। कोई रन नहीं इस बॉल पर। 7.3 के बाद 61 पर 3 टीम मुंबई इंडियंस। अगर आपको कवरेज पसंद आ रही हो तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ साथ स्ट्रीम को भी लाइक करिए। आपका अपना चैनल केएम पंक यूट्यूब चैनल, हर मुकाबले को आप तक सरल भाषा में पहुंचाने का जिम्मा हमने उठा रखा है। चौथी बॉल ओवर की राउंड द स्टंप से कृणाल पांड्या, पैरों की तरफ बॉल, थोड़ा सा पीछे जाकर खेल दिया इस गेंद को तिलक वर्मा ने डीप मिड विकेट की तरफ। इस बार 1 रन के लिए ही दौड़े नमनधीर और तिलक वर्मा। 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 62। कृणाल पांड्या एक बहुत ही ज्यादा मंझे हुए गेंदबाज, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इस खिलाड़ी के पास। पहले मुंबई इंडियंस के लिए खेला करते थे, उसके बाद अब टीम कृणाल पांड्या की जो है वो है टीम आरसीबी। आरसीबी ने कृणाल पांड्या पर निवेश किया और पिछले संस्करण में कृणाल पांड्या ने आरसीबी को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। फ्लाइट डिलीवरी, खेल दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ नमनधीर ने। फाइनिश लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है, 2 रन यहां मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी का बढ़िया कार्य, अपनी बाईं तरफ दौड़ते हुए गेंद को रोका है बाउंड्री लाइन से पहले टिम डेविड ने। 1 रन आया इस बॉल पर और स्कोर हो चुका है 63 रन। टीम आरसीबी के जो हेड कोच हैं वो है एंडी फ्लावर। क्या शानदार इनका अभियान रहा है, इनका कैंपेन रहा है एज अ कोच, बहुत ही ज्यादा शानदार। कई टीम्स को कई मुकाम हासिल कराए हैं। कृणाल पांड्या का पहला ओवर, 6 रन आ चुके हैं पहली 5 गेंदों से। अंतिम गेंद ओवर की राउंड द स्टंप से पटकी हुई गेंद तेज गति की, ये बल्लेबाज के ऊपर से चली गई है। इस सरप्राइज बाउंसर के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। बहुत ज्यादा ऊपर थी ये गेंद, वाइड का इशारा दिया गया अंपायर के द्वारा। क्या एक और आएगी कृणाल पांड्या के द्वारा? क्या एक और पटकी हुई तेज गति की गेंद आएगी? लेट्स सी।
कृणाल पांड्या की गेंद, अंपायर को क्रॉस करते हुए कृणाल वापस आ गए एक बार फिर से करेंगे बॉल। तिलक वर्मा एक बार फिर से तैयार होते हुए, आखिरी बॉल इस ओवर की। चलिए ये गेंद आगे की तरफ थी, स्टंप लाइन पर थी। तिलक वर्मा ने डीप मिड विकेट की तरफ खेला इस गेंद को। विराट कोहली खड़े हुए डीप मिड विकेट पर। अरे विराट कोहली एक और बार देने वाले थे ओवर थ्रो के रूप में एक रन। जो प्रैक्टिस विकेट थी उसके एक एज पर लगकर बॉल इतनी उछल गई कि जितेश शर्मा के ऊपर से निकल गई और एक समय के लिए ऐसा लगा जैसे शायद यहां पर भी एक ओवर थ्रो के रूप में रन दे देंगे विराट कोहली, लेकिन नहीं, सिर्फ एक रन आया इस बॉल पर। 8 रन इस ओवर से आए। 8वां ओवर समाप्त हो चुका है। स्कोर है टीम मुंबई इंडियंस का 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर। विनय जी हमारे साथ जुड़े हुए, गजेंद्र जी कह रहे हैं आरसीबी जीतेगी। श्रेया जी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ राज भी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सविता यादव जी भी हमें सुन रही हैं। सागरिका महापत्रा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। 3 विकेट्स गिर चुके हैं टीम मुंबई इंडियंस के। आज सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से फ्लॉप हुए। उनका प्रदर्शन काफी ज्यादा चिंताजनक बन गया है टीम मुंबई इंडियंस के लिए। रन्स नहीं निकल रहे उनके बैट से, काफी ज्यादा खराब ये बात। रन्स निकलने चाहिए। सूर्य कुमार यादव 0 पर आउट हुए, पहली गेंद पर आउट हुए। और आउट किसने किया? भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया। रैन रिकल्टन, उसके बाद रोहित शर्मा जो आज एक बार फिर से शुरुआत अच्छी प्राप्त करते हुए हमें दिखे, लेकिन उस शुरुआत को वो कन्वर्ट नहीं कर पाए एक बड़ी इनिंग्स में। उसके बाद हमें देखने को मिले सूर्य कुमार यादव जो कि आउट हो गए बिना कोई रन बनाए। कृणाल पांड्या के पहले ओवर से आए 8 रन। स्पिन हमें दोनों तरफ से देखने को मिलती हुई और फिजियो मैदान पर आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि शायद से कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो गए। चलिए तब तक हम अपने दर्शकों से ही बातचीत करते हैं। रुबाइदा जी का बहुत बहुत स्वागत। सलोनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, थैंक यू सो मच सलोनी जी। किशन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मोहन कुमार जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मोहन जी कहते हुए कि ईसाला कप नामदू। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए, कह रहे हैं एमआई जीतेगी। स्कूल बॉय आशीष वो कह रहे हैं आरसीबी जीतने वाली है। पुतुल कुमारी जी वो निराश है, थोड़ा सा गुस्से में है, न जाने क्यों, शायद मुंबई इंडियंस के विकेट्स गिर गए इस वजह से। अजान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं आरसीबी जीतने वाली है। प्रिंस कौशिक वो कह रहे हैं मुंबई इंडियंस जीतेगी। और प्रिंस का नाम पढ़कर मुझे प्रिंस यादव की याद आई, लखनऊ सुपर जायंट्स की याद आई। थोड़ी देर पहले हम मुकाबला देख रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स और टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। मुकाबला आखिरी ओवर तक गया और उसकी उम्मीद किसी को नहीं लग रही थी, क्योंकि उर्विल पटेल ने आज 13 गेंदों में अर्धशतक लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स को पूरी तरीके से ड्राइविंग सीट पर ला दिया था। लेकिन मिडिल ओवर्स के बाद डेथ ओवर्स में बढ़िया गेंदबाजी लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों की। ऋषभ पंत, उनको थोड़ी सी गेंदबाजों की कमी महसूस हुई, इसी वजह से आखिरी ओवर किया एडन मार्करम ने। और एडन मार्करम, उनसे हुई ज्यादा अच्छी गेंदबाजी नहीं और मैच जीत लिया टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने। 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर मैच को समाप्त किया शिवम दुबे ने। पारी के 9वें ओवर की तरफ हम बढ़ते हैं। शेफर्ड के स्थान पर आए सुयश, अच्छी गेंदबाज है सुयश, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर। ओवर द विकेट से पहली गेंद, सामने तिलक वर्मा, फ्लाइटेड डिलीवरी बिल्कुल बैट के आगे, 5वें स्टंप पर गेंद थी। अलोंग द ग्राउंड खेला उसको लॉन्ग ऑन की तरफ। तिलक वर्मा ने जैकब बैटल खड़े हुए लॉन्ग ऑन पर, गेंद को पिक करेंगे, थ्रो करेंगे जितेश की तरफ और 1 रन आएगा इस बॉल पर। नमनधीर अब स्ट्राइक पर। 15 गेंदों में 17 बनाकर खेल रहे हैं नमनधीर, 19 में 20 बनाकर खेल रहे हैं तिलक वर्मा। आइए एक बार देख लेते हैं टीम मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों का स्कोर, उन खिलाड़ियों का स्कोर जो आउट हो चुके हैं। रोहित शर्मा ने आज एक बार फिर से बढ़िया शुरुआत प्रदान की अपनी टीम को। 10 गेंदों में उन्होंने 22 रन बनाए, 2 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए। सबको मजा आ रहा था उनका खेल देखकर, लेकिन भुवनेश्वर ने उन्हें आउट किया। ऑफ स्टंप से बाहर फ्लाइटेड बॉल, डीप कवर्स की तरफ गेंद को धकेला है नमनधीर ने। यहाँ 2 रन मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1 रन के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़िया फील्डिंग फील्डर के द्वारा, जिसकी वजह से 1 ही रन आया इस बॉल पर। मुंबई इंडियंस इस समय अंक तालिका में 9वें स्थान पर है, टीम आरसीबी 4थे स्थान पर। और आज अगर आरसीबी जीतती है ये मैच, तो आरसीबी 4थे से सीधे पहले स्थान पर पहुंच जाएगी। आरसीबी का नेट रन रेट ऊपर वाली सभी टीम से अच्छा है। स्ट्राइक पर तिलक वर्मा, सुयश की अगली गेंद ओवर द विकेट से। ये गेंद मिडिल स्टंप के सामने थी, लेकिन गिरकर हल्की सी बाहर निकली। सीधे बल्ले से गेंद को खेला मिड ऑफ की तरफ बल्लेबाज तिलक वर्मा ने। कवर्स के खिलाड़ी आए बॉल के सामने, बॉल को उन्होंने पिक किया और तिलक वर्मा और नमनधीर ने तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया।
68 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम मुंबई इंडियंस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। टीम मुंबई इंडियंस की गाड़ी, विकेट्स बहुत जल्दी जल्दी गिरे हैं, बहुत ज्यादा गिरे, जिसकी वजह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नमनधीर और तिलक वर्मा एक पार्टनरशिप बुनते हुए ये दोनों ही खिलाड़ी इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ नमनधीर ने, और सेल करती हुई जाएगी ये बाउंड्री लाइन के बाहर। नमनधीर का ये बढ़िया शॉट। हम बात कर रहे थे कि थोड़ा स्लो खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज, थोड़ा समझदारी के साथ खेल रहे हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि हर ओवर में आप एक बाउंड्री ढूंढते रहें। स्लॉट में गेंद और नमनधीर ने बल्ला घुमाया, 82 मीटर का छक्का लगाया इन द आर्क एंड आउट ऑफ द पार्क। ये तो पूरी तरीके से नमनधीर की आर्क में थी बॉल। लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेला और 6 रन अर्जित किए मुंबई इंडियंस के लिए। 6 रन, स्कोर पहुंचा 74 तक। 5वीं गेंद ओवर की। सुयश किस तरीके से करेंगे कमबैक, गुड लेंथ की गेंद के साथ करेंगे। फोर्थ स्टंप पर बॉल थी, अंदरूनी किनारा लगा, पैर पर लगी बॉल, गई पॉइंट की तरफ। रन नहीं मिलेगा इस बॉल पर नमनधीर को। हॉरिजॉन्टल बैट के साथ शॉट खेलने की कोशिश की गई, अंदरूनी किनारा, गेंद लगी पैड पर और गई बॉल सीधे पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी की ओर। 8.5 के बाद 74 पर 3 टीम मुंबई इंडियंस। और ऐसा लगता है कि शायद से एक बार फिर से बल्लेबाज थोड़ा सा इंजर्ड हो गए। नमनधीर के पैर पर लगी थी बॉल, मैंने आपको बताया था, और चोट लग गई है नमनधीर को, दर्द उठा है उनके पैर में, इसी वजह से फिजियो आ चुके हैं मैदान में। सुयश शर्मा, उनके इस ओवर की पहली 5 गेंदों से 9 रन आ गए हैं। फिजियो मैदान पर है। नमनधीर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं 24 रन बनाकर, और नमनधीर ने समय समय पर अपनी टीम के लिए रन्स बनाए हैं। एक बार फिर से उनकी कोशिश यही रहेगी कि वो अपनी टीम के लिए रन्स बनाएं और टीम को एक अच्छे स्कोर तक लेकर जाएं। मोनू गेमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। प्रीतम कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुणाल कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सागरिका जी का बहुत बहुत स्वागत। आनंद कुमार पटेल जी कह रहे हैं आरसीबी जीतने वाली है। मोनू गेमर कह रहे हैं हाय, कैसे हैं आप मोनू जी। सुरेंद्र सिंह जी भी हेलो बोल रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। कुणाल कुमार जी का भी बहुत बहुत स्वागत। गजेंद्र जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय जी कह रहे हैं मुंबई इंडियंस जीतने वाली है। कुछ और भी लिखिए आप लोग, क्या कहना चाहेंगे आप रोहित शर्मा के प्रदर्शन के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप सूर्य कुमार यादव के प्रदर्शन के बारे में। रेयान रिकल्टन भी आज ज्यादा रन बना नहीं पाए, उन्होंने बनाए मात्र 2 रन। सूर्य कुमार यादव अपना खाता नहीं खोल पाए। नमनधीर नंबर 3 पर आए, तो नमनधीर नंबर 3 पर आए थे, सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर आए। और ये कहा जा सकता है कि पहले के 2 बल्लेबाज और उसके बाद नंबर 4 के बल्लेबाज को आउट किया है भुवनेश्वर ने, नॉट टॉप 3। मनोज कुमार जी हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंस जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैष्णव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। टेक्निकल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दुबई से हमें सुन रहे हैं डार्कनेस जी, और उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा है आई एम फ्रॉम दुबई यू नो। जी हाँ बिल्कुल डार्कनेस जी, अगर आपने आज हमें बता दिया है तो फिर हम बिल्कुल याद रखेंगे इस बात को। श्रीवश ब्लॉक्स, हेलो कैसे हैं आप। मोनू गेमर ने हमें सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जॉर्डन से हमें देख रहे हैं राइश ब्लॉक्स, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है के एम पंक यूट्यूब चैनल पर। 8.5 के बाद 74 पर 3 टीम मुंबई इंडियंस। अगर कवरेज आपको पसंद आ रही है तो स्ट्रीम को जरूर लाइक करिएगा, और इस स्ट्रीम की लाइक्स की अगर मैं बात करूं तो 1.4 के लाइक्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। जल्दी से हमारी 2 के लाइक्स कंप्लीट करा दीजिए आप सभी दर्शक। उम्मीद करता हूं कि अगले 2 मिनट में हमारी 2 के लाइक्स पूरी हो जाएंगी। अरब शेख भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहां से सुन रहे हैं आप लोग हमें जरूर बताइए। नवतुंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं आरसीबी इज गोइंग टू विन दिस गेम। नेपाल से हमें सुनते हुए मंडल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बनवारी लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मैं हार्दिक पांड्या का फैन हूं, लेकिन हार्दिक पांड्या आज खेल नहीं रहे। जरूर हार्दिक पांड्या को थोड़ी सी दिक्कत हुई है, ये बताया तो यही गया है कि उनको चोट लगी है, लेकिन जिस तरीके की फॉर्म में है टीम मुंबई इंडियंस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि टीम मुंबई इंडियंस ये सोच ले कि सूर्य कुमार यादव को हम कैप्टन बना रहे हैं, हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी से हटा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा एक बड़ा स्टेटमेंट होगा, शायद से इतनी जल्दी वो स्टेटमेंट हमें ना सुनने को मिले, लेकिन अगर इसी प्रकार की सूरत हाल रहे टीम मुंबई इंडियंस के तो बहुत जल्दी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे मुंबई इंडियंस की साइड में। मोहम्मद सिराज, उन्होंने 41 ओवर की गेंदबाजी की है टाटा आईपीएल में 2026 में, और 117 डॉट बॉल्स उन्होंने की हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं मोहम्मद शमी, 43 ओवर की गेंदबाजी और 114 डॉट बॉल्स। अंतिम गेंद ओवर की
स्टंप लाइन पर गेंद खेल दिया, उस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ नमन धीर ने। फिजियो आए थे मैदान पर और फिजियो नमन धीर को पूरी तरीके से ठीक करके गए हैं। अब सही तरीके से दौड़ पा रहे हैं नमन धीर। 1 रन आएगा आखिरी बॉल पर और इसी के साथ समाप्ति हो जाएगी 9वें ओवर की। मुंबई इंडियंस का स्कोर 75, 3 विकेट के नुकसान पर। कोमल जी हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। रहा गेमिंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीरज गेमिंग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विराट कोहली के वो फैन है। ड्रीम क्रिकेटर कह रहे हैं मुंबई इंडियंस जीतने वाली है। ऑस्ट्रेलिया से एंटरटेनमेंट ब्लास्टर हमें सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दूर दूर से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए। मुकाबला ही इतना ज्यादा घमासान है, बहुत ज्यादा शानदार ये मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। एक तरफ ऐसी टीम जिसकी फैन फॉलोइंग की हम जितनी चर्चा करें उतनी कम। मुंबई इंडियंस, आरसीबी दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, लेकिन आरसीबी की थोड़ी सी ज्यादा बेहतर मानी जाती है क्योंकि वहां पर लॉयल्टी ज्यादा है। कृणाल पांड्या आ चुके हैं, पैरों की तरफ बॉल करेंगे। गुड लेंथ की गेंद ऑन साइड की तरफ बॉल को खेला नमन धीर ने। पहला रन तेजी से लिया, बहुत अच्छी तरीके से दौड़े थे नमन धीर, यानी कि अब पूरी तरीके से फिट एंड फाइन है। तिलक वर्मा 20 में 21 बनाकर खेल रहे हैं। पिछले ओवर में एक मैक्सिमम लगाया था नमन धीर ने। अब एक बाएं हाथ के स्पिनर के सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा लगाना चाहेंगे एक बड़ा शॉट। हर ओवर में एक बाउंड्री अगर आती रहेगी तो मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा रहेगा। तिलक वर्मा की वो पारी हमें याद आती है जहां पर उन्होंने शायद से पहली 22 या 23 गेंदों में 19 या 20 रन बनाए। उसके बाद अगली 23 गेंदों में उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। इस बार पॉइंट की तरफ गेंद को खेला तिलक वर्मा ने। फील्डर पहुंच गए बॉल तक और गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन से पहले रोका। स्ट्राइक रोटेट करते हुए और फिर उसके बाद वापस आते हुए दोनों बल्लेबाज। 9.2 के बाद टीम मुंबई इंडियंस 78 पर 3, 50 की पार्टनरशिप पूरी हुई नमन धीर और तिलक वर्मा के बीच में। आरसीबी की जो पोजीशन है पॉइंट्स टेबल में वो 4th है। आरसीबी बहुत आगे। पैरों की तरफ ये गेंद थी, शफल किया बल्लेबाज तिलक वर्मा ने। गेंद को खेला डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में सॉफ्ट हैंड्स के साथ और एक ही रन आएगा इस बॉल पर। खेला तो इस उम्मीद में था तिलक वर्मा ने कि 2 रन आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ 1 रन। 9.3 के बाद 79 पर 3 टीम मुंबई इंडियंस, सिर्फ 1 रन आया इस बॉल पर। चौथी बॉल ओवर की खेलेंगे नमन धीर। 8.32 का रन रेट हमें देखने को मिल रहा है। अगली गेंद राउंड दी स्टंप से, स्टंप लाइन पर एक बार फिर से बॉल रूम बनाकर नमन धीर ने बॉल को खेला लॉन्ग ऑफ की ओर। 1 रन इस बॉल पर भी। पहली 4 गेंदों में आए हैं 5 रन। अभिजीत रॉय हमारे साथ है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। रणवीर ब्लॉक्स, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमल सोलंकी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। देखते हैं कि आज विराट कोहली कितने रन्स बनाते हैं। पिछले मुकाबले में प्रिंस यादव ने एक ड्रीम डिलीवरी के साथ विराट कोहली का प्राप्त किया था और अपना ड्रीम पूरा किया। 5वीं गेंद ओवर की। ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप लेकर गए हैं बॉल को डीप स्क्वायर लेग की तरफ। तिलक वर्मा, खिलाड़ी डीप से आते हुए बॉल तक। विराट कोहली डीप मिड विकेट पर लगे थे, वो दौड़े अपनी बाईं तरफ और उन्होंने गेंद को पिक किया, थ्रो किया नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ। कृणाल पांड्या ने बॉल को कलेक्ट किया और दोनों बल्लेबाजों को 1 रन पर रोका गया। आखिरी गेंद 10वें ओवर की। इस बॉल के बाद हम मिडवे मार्क तक पहुंच जाएंगे इस पारी में। 9.5 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 81 पर 3 टीम मुंबई इंडियंस। 42 में 53 की पार्टनरशिप चौथे विकेट के लिए नमन धीर और तिलक वर्मा के बीच। 3 विकेट्स बहुत जल्दी गिर गए थे। इन दोनों बल्लेबाजों को एक साझेदारी बनानी थी और साझेदारी बनाई गई है। शॉट ऑफ लेंथ गेंद शरीर की तरफ पुल लगाया है नमन धीर ने। गेंद को खेला है सीधे डीप स्क्वायर लेग की तरफ जहां पर खड़े हैं जॉश हेजलवुड। समाप्ति होगी 10वें ओवर की। 10 ओवर्स के बाद टीम मुंबई इंडियंस 82 पर 3। 1 रन आया अंतिम गेंद पर। मुंबई इंडियंस के इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम को बहुत हद तक संभाल लिया है और जरूरत है अब थोड़ा सा एक्सेलरेट करने की। 8.20 की औसत से रन्स बन रहे हैं। अगर इसको 9 या 10 के करीब लेकर जाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मुंबई इंडियंस के लिए यह मुकाबला जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं कि जीतते हैं या फिर नहीं। चलिए यहां से आपके साथ जुड़ेंगे आपके अंपंग सर ओवर टू यू। तो चलिए साथियों, बीच में मुंबई की पारी लड़खड़ाई थी, लेकिन उसके बाद नमन धीर और तिलक वर्मा ने मिलकर के अब अच्छी साझेदारी की है। दोनों ने मिलकर के 42 गेंदों पर 54 रन की पार्टनरशिप कर ली है। गेंदबाजी पर रोमारियो शेफर्ड आ रहे अपने दूसरे ओवर के साथ। इससे पहले का पहला ओवर काफी किफायती रहा था, मात्र 4 रन दिए थे उन्होंने। ओवर की पहली गेंद मिडिल स्टंप की बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी और इस गेंद को पुल कर दिया नमन धीर ने। स्क्वायर लेग ऊपर से गेंद जाएगी फॉर द मैक्सिमम। शानदार छक्का नमन धीर का। नमन धीर ने अपनी बल्लेबाजी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। 10.1 ओवर पे मुंबई 88 पर 3। दूसरी बॉल रोमारियो शेफर्ड की।
सामना करेंगे नमन धीर। हमारे जितने भी मित्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे, अगली बॉल लेकर के चलेंगे रोमारियो शेफर्ड। ओवर द विकेट से इस बार हल्के हाथों का प्रयोग करते हुए गेंद को कवर की तरफ खेला, फील्डर वहां पे मौजूद है, रन बनाने का मौका नहीं। 10.2 ओवर पे एमआई का स्कोर 88, 3 विकेटों के नुकसान पर। आज हमने देखा आरसीबी के गेंदबाज खास करके भुवनेश्वर कुमार ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की, 3 के तीनों विकेट्स उन्होंने चटकाए और पहले रोहित शर्मा फिर अगली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव का उन्होंने विकेट ले लिया था। ओवर द विकेट से शेफर्ड लेग स्टंप के बाहर की गेंद रू बनाते हुए गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला है 1 रन के लिए। नमनधीर की बात करें तो ये 25 गेंदों पर 35 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं तिलक वर्मा 23 गेंदों पे 25 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो आज हमने उर्विल पटेल की आंधी देखी और उन्होंने जब अपना अर्धशतक पूरा किया तो एक पर्ची निकाली जिसपे लिखा था दिस इज फॉर यू पापा। तो अपने पिताजी को वो शानदार अर्धशतक उन्होंने भेंट किया। बहुत शानदार पारी आज उर्विल पटेल की देखने को मिली। ओवर की चौथी बॉल के साथ आएंगे रोमारियो शेफर्ड, सामने होंगे तिलक वर्मा। राउंड द विकेट से पटकी हुई गेंद, इस बार गेंद को पॉइंट की तरफ खेला, अच्छी फील्डिंग वहां पे भुवनेश्वर कुमार की, रन बनाने का कोई मौका नहीं। सूर्य कुमार यादव के लिए दिन आज का बेहद निराशाजनक रहा और पहली ही गेंद पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया। चलिए यहां पर बता दूं कि कल का मुकाबला पंजाब का होगा, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। अगली गेंद रोमारियो शेफर्ड की 5वीं बॉल, सामने होंगे तिलक वर्मा। इस बार बैकफुट पे आते हुए गेंद को स्क्वायर की तरफ खेल दिया है, मिलेगा 1 रन। और क्या लग रहा साथियों, भुवनेश्वर कुमार जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें अब भारतीय टीम में वापस बुलाने का समय आ चुका है? क्या बेहतरीन गेंदबाजी साथियों, बहुत अच्छी स्विंग, बहुत अच्छा कंट्रोल। लग ही नहीं रहा है कि उम्र के साथ वो पुराने हो रहे हैं, बल्कि लग रहा है अपने आप को लगातार इनोवेट कर रहे हैं, अपने आप को रीडिस्कवर कर रहे हैं। आखिरी बॉल के साथ रोमारियो शेफर्ड, स्ट्राइक पर रहेंगे नमन धीर। इस बार ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद, कलाई का प्रयोग किया, मिड विकेट की तरफ गेंद को खेला है 1 रन के लिए और सिंगल के साथ ओवर हुआ है समाप्त। 9 रन आए ओवर से। 11 ओवरों के बाद मुंबई का स्कोर 91 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। कुणाल कुमार ने तो वर्डिक्ट दे दिया। हमारे मित्र कुणाल कुमार कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव को मुंबई से निकाल देना चाहिए। वहीं हमारे मित्र आशु कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहा है क्या? जी नहीं, हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं, अभी भी वो चोट से उबरे नहीं है। एक मित्र सुशील कह रहे हैं कि तिलक वर्मा का कितना रन हुआ, तो उन्होंने 25 गेंदों पे 26 और वहीं नमनधीर ने 26 गेंदों पे 36 रन बनाए हैं। 11 ओवर पे मुंबई 91 पर 3। और चलिए आपको बता देते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी हुई मुंबई इंडियंस की। पारी की शुरुआत रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा ने की थी। रियान रिकल्टन ने 4 गेंदों पे 2 रन बनाए थे, वहीं रोहित शर्मा ने तेजी के साथ 10 गेंदों पर 22 रन बनाए और फिर सूर्य कुमार यादव को पहली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने आउट कर दिया। इस वक्त नमनधीर और तिलक वर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं। रियान रिकल्टन 2 रन, रोहित शर्मा 22, सूर्य कुमार यादव 0 और बल्लेबाजी कर रहे हैं नमनधीर 36 पे और तिलक वर्मा 26 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब कृणाल पांड्या को वापस उनके तीसरे ओवर के लिए बुलाया जा रहा है। 12वां ओवर शुरू होने वाला है। गेंदबाजी पर कृणाल पांड्या और बल्लेबाजी पर रहेंगे नमनधीर। मुंबई की टीम जो कि कागजों पे तो बहुत मजबूत लग रही है, लेकिन प्रदर्शन कुछ खास हुआ नहीं है। अगली बॉल कृणाल पांड्या की, इस बार लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद, स्क्वायर लेग पर इस गेंद को खेला है। 1 रन के लिए भागेंगे बल्लेबाज और पूरा भी कर लेंगे। 11.1 ओवर पे मुंबई का स्कोर 92, 3 विकेटों के नुकसान पर। और अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो साथियों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब नंबर 5 पर पहुंच चुकी है। अगली बॉल, इस बार घुटना टिकाते हुए नमनधीर ने गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया बड़े शॉट के लिए। शानदार छक्का तिलक वर्मा का, तिलक वर्मा के बल्ले से आया है शानदार छक्का।
तो तिलक वर्मा ने इस गेंद को भेजा है फॉर दी मैक्सिमम। जैसे ही देखा कृणाल पांड्या की गेंद उनके करीब है, वैसे ही घुटना टिकाते हुए गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ से पूरी ताकत के साथ बल्ला घुमाते हुए भेज दिया 6 रनों के लिए। और देखते ही देखते दोनों की पार्टनरशिप जो है वो 70 रनों की हो चुकी है। अगली बॉल के साथ वापस, इस बार बल्ले का किनारा लगा है। कृणाल पांड्या की गेंद, हल्के हाथों का प्रयोग किया था बल्लेबाज ने, मिलेगा सिंगल। 11.3 ओवर पे मुंबई 99 पर 3। कृणाल पांड्या जो कि मुंबई के लिए खेल चुके हैं, काफी सीजन खेल चुके हैं और अब उसके विरुद्ध खेल रहे हैं। अगली बॉल के साथ आएंगे कृणाल पांड्या, सामने होंगे नमनधीर। इस बार लेग स्टंप की लाइन की गेंद, ऑन साइड पर गेंद को खेला तिलक ने 1 रन के लिए, नमनधीर ने 1 रन के लिए 38 के स्कोर पर पहुंचेंगे। 11.4 ओवर पे मुंबई ने अपने 100 रन पूरे कर लिए। 11.4 ओवर पे मुंबई 103 विकेट्स के नुकसान पर। अगली गेंद, इस बार गेंद को मिड ऑन पर खेल दिया बल्लेबाज ने, मिल जाएगा 1 रन। तो साथियों अब चेन्नई की टीम नंबर 5 पे, लेकिन अगर आज का मुकाबला आरसीबी हार जाएगी तो फिर चेन्नई नंबर 4 पे पहुंच जाएगी और आरसीबी टॉप 4 से बाहर हो जाएगी। तो जितने चेन्नई के फैंस हैं वो जरूर आज मुंबई के लिए चीयर कर रहे होंगे। वहीं आरसीबी का अगला जो 3 मुकाबले होंगे वो केकेआर, पंजाब और हैदराबाद के साथ है, जो कि तीनों ही टीम अच्छे फॉर्म में हैं। वहीं अगर चेन्नई की बात करें तो इनके आने वाले मुकाबले एक बार फिर से लखनऊ के साथ, फिर हैदराबाद और फिर गुजरात के साथ। चेन्नई को अगर क्वालिफाई करना तो इन 3 में से 2 मुकाबलों को हर हाल में जीतना पड़ेगा। वैसा ही हाल राजस्थान का भी है और राजस्थान की टीम देखिए अभी टॉप 2 पर थी, कभी नंबर 1 पे थी और इस वक्त वो नंबर 6 पे पहुंच चुकी है। देखिए क्रिकेट में कब कौन सी टीम कौन से पायदान पर चले जाए पता ही नहीं चलता। बारह ओवर का खेल हुआ है समाप्त। मुंबई इंडियंस का स्कोर हुआ है 102 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और चलिए अब देखते हैं 13वें ओवर पे कौन से गेंदबाज आते हैं। नमनधीर 29 गेंदों पर 39 रन बना करके, वहीं तिलक वर्मा 28 गेंदों पर 34 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद लेकर के चले रसिकधर सलाम। ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को ड्राइव कर दिया है कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच से और गेंद जाएगी बड़े शॉट के लिए। नमनधीर बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, शानदार चौका नमनधीर के बल्ले से आता हुआ। और अब 30 गेंदों पर 43 पर पहुंच चुके हैं नमनधीर, 7 रन दूर है अपने अर्धशतक से। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी हमारे साथ बने हुए हैं। अगली बॉल ओवर की दूसरी, रसिकधर सलाम की, सामना करेंगे नमनधीर। इस बार इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पर खेल दिया है, एक बार फिर से गेंद जा सकती है बड़े शॉट के लिए। जी हां, एक और चौका। और ये लीजिए, फील्डर जो गेंद का पीछा कर रहे थे वो भागते भागते बैरिकेड के बाहर चले गए। 12.2 ओवर पे मुंबई का स्कोर 110 3 विकेटों के नुकसान पर। एक मित्र कह रहे हैं कि मुकाबला मुंबई और आरसीबी का चल रहा, तो आप बाकी टीमों का नाम क्यों ले रहे हैं। तो देखिए ये बायलैटरल सीरीज नहीं है जो मुंबई और आरसीबी के बीच चले, यहां पर और भी कई टीमें हैं और हमें देखना पड़ता है कि कौन सी टीम कितने अंकों में किस पायदान पर है। चलिए अगली बॉल के साथ चलेंगे रसिकधर सलाम। ओवर की तीसरी बॉल, सामने होंगे नमनधीर। इस बार बोल्ड कर दिया है, बहुत शानदार गेंद रसिकधर सलाम की, लेग स्टंप उड़ा दिया नमनधीर का। आरसीबी को मिली चौथी सफलता। नमनधीर जो बहुत कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे उन्हें बोल्ड कर दिया रसिकधर सलाम ने। बहुत बेहतरीन गेंद, सीधा लेग स्टंप ही उड़ गया। 12.3 ओवर पे मुंबई 110 4 विकेटों के नुकसान पर। नमनधीर 32 गेंदों पर 47 रन बना करके हो चुके हैं आउट। और अब देखना है अगले बल्लेबाज के रूप में कौन आएंगे। विल जैक्स आ रहे हैं। विल जैक्स भी कमाल के बल्लेबाज हैं, अगले बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं।
यहां से साथियों इस ओवर के बाद 7 ओवर का खेल बाकी रहेगा और जिस तरह से इस वक्त रन बन रहे हैं मुझे लग रहा है कि शायद 180 के आसपास का स्कोर मुंबई अगर बनाएगी तो वो अच्छा स्कोर कहलाएगा। ओवर की चौथी गेंद रसिक सलाम की, सामने होंगे विल जैक्स। 27 साल के 24 मुकाबलों पे 520 रन है, एक शतक इनके नाम और आरसीबी के लिए खेल चुके हैं। और आपको याद होगा आरसीबी ने विल जैक्स को दिया था मुंबई को और फिर मुंबई ने टिम डेविड को दे दिया था आरसीबी को ऑक्शन के दौरान। तो टिम डेविड इधर से उधर हो गए और विल जैक्स उधर से इधर आ गए। चलिए यहां पर ओवर की चौथी बॉल आएगी, रसिक सलाम की तरफ से स्ट्राइक पर रहेंगे विल जैक्स। ओवर द विकेट से रसिक सलाम, फुलर गेंद को ड्राइव किया, कवर की तरफ फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग वहां रोमारियो शेफर्ड की, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 12.4 ओवर के बाद मुंबई 110 पे 4। ओवर की 5वीं बॉल लेकर के आएंगे रसिक, सामने होंगे विल जैक्स। कल हमने बता दिया कल का मुकाबला पंजाब का होने वाला है और उस मुकाबले पर भी आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। मुकाबला पंजाब और दिल्ली के बीच होगा। पंजाब को बस एक जीत की जरूरत है क्वालिफाई करने के लिए और फिर उनके नाम के बगल में क्यू भी लिख दिया जाएगा। अगली गेंद उछाल लेते हुए गेंद जाएगी सीधा विकेट कीपर के पास, रन बनाने का कोई मौका नहीं। वहीं मंगलवार के दिन गुजरात और हैदराबाद की टीमें भिड़ेंगी आमने सामने। बुधवार के दिन आरसीबी का अगला मुकाबला केकेआर के साथ होगा, रायपुर में ही वो मुकाबला होगा। वहीं बृहस्पतिवार के दिन पंजाब मुंबई का मुकाबला और फिर शुक्रवार को एक बार फिर से भिड़ेगी लखनऊ और चेन्नई की टीम। ओवर की अगली बॉल रसिक सलाम की, सामने है विल जैक्स। ये ओवर की आखिरी बॉल होने वाली है, 13वें ओवर की अंतिम बॉल। चलिए अंतिम गेंद लेकर के चले रसिक सलाम, सामने विल जैक्स। इस बार बल्ले का किनारा, सोची समझी ये शॉट, गेंद जाएगी थर्ड मैन की तरफ 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया चौका विल जैक्स के बल्ले से आता हुआ। 13 ओवरों के बाद मुंबई इंडियंस 114 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। यहां से 7 ओवर का खेल बाकी और देखना इन 7 ओवरों पे मुंबई इंडियंस अपने स्कोर को कहां तक पहुंचाती है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आपकी क्या राय है साथियों, बताइएगा क्या बनेगा मुंबई का स्कोर। और यहां से साथियों कुछ ओवर के लिए एक बार फिर से जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। रसिक सलामदार ने बदला लिया नमन धीर से, विकेट निकाला उन्होंने एक बाउंड्री कंसीड करने के बाद। यहां भी कॉन्टेस्ट बहुत कमाल का हमें देखने को मिल रहा है और देखते हैं कि कितने रन्स बनाती है टीम मुंबई इंडियंस 20 ओवर्स की समाप्ति पर। वैसे समाप्ति हुई पारी के 13वें ओवर की एक बाउंड्री के साथ। 14वें ओवर की पहली गेंद अब हम देखेंगे, गेंदबाजी पर सोयश और बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है विल जैक्स। पहली गेंद ओवर की और इस पहली बॉल पर आ जाएगा 1 रन। स्ट्राइक रोटेट हुई है, एक्चुअली तिलक वर्मा स्ट्राइक पर है, माफी चाहूंगा, विल जैक्स अब स्ट्राइक पर आए हैं और तिलक वर्मा ने गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ खेला। आएगा 1 रन इस बॉल पर। 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है टीम मुंबई इंडियंस का 115 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पारी के 14वें ओवर का खेल इस समय चलता हुआ। सोयश शर्मा, उनकी अगली गेंद रहेगी विल जैक्स के लिए। सोयश एक बहुत ही कमाल के गेंदबाज हैं और विकेट्स उन्होंने समय समय पर अपनी टीम्स के लिए निकाले हैं। एक बार फिर से उनको विकेट्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि मुंबई इंडियंस भले ही अपने 4 विकेट्स खो चुकी हो, स्कोर उनका अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी बॉल ओवर की, सोयश शर्मा ओवर द विकेट से, सामने रहेंगे विल जैक्स, दाएं हाथ के बल्लेबाज। फ्लाइटेड डिलीवरी, गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला विल जैक्स ने। जमीन के समानांतर बॉल जाएगी सीधे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के पास। 1 रन आएगा इस बॉल पर, स्कोर हो जाएगा 116 रन। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत जो हमारे साथ जुड़े हैं केएम पंक यूट्यूब चैनल पर। ये बहुत ही कमाल का मुकाबला चल रहा है। एक तरफ रोहित शर्मा है, एक तरफ विराट कोहली है। इन दोनों खिलाड़ियों को हमने एक साथ न जाने कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हुए देखा है, न जाने कितनी उपलब्धियां हासिल करते हुए देखा है। लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग इन दोनों खिलाड़ियों को एक दूसरे के सामने ले आई है। फ्लाइटेड बॉल है, एक बार फिर से डीप मिड विकेट की तरफ बड़ा प्रहार है और स्टैंड्स में बॉल है।
गजब का शॉट, बहुत अच्छी तरीके से पिक किया बॉल को तिलक वर्मा ने, एक छक्का जड़ दिया है तिलक वर्मा ने। 30 में 41 बनाकर खेलते हुए तिलक वर्मा, 1012 छक्के लग चुके हैं अब तक इस प्रतियोगिता में। फ्लाइटेड डिलीवरी को डीप मिड विकेट की तरफ खेलते हुए तिलक वर्मा, एक घुटने पर आकर उन्होंने जड़ दिया है ये मैक्सिमम। तिलक वर्मा अपने अर्धशतक से मात्र 9 रन दूर। 9 चौके और 6 छक्के लग चुके हैं अब तक इस मैच में। चौथी गेंद राउंड द स्टंप से अंदर की तरफ लेकर आए हैं बॉल को सुयश, कट किया है तिलक वर्मा ने, पॉइंट की तरफ गेंद को खेला, 1 रन दौड़कर पूरा किया जाएगा, उसी के साथ स्कोर हो जाएगा 1 2 3 पर 4। 13.4 ओवर का खेल हो चुका है। रजत पाटीदार, उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर से नई गेंद से आग उगलते हुए दिखे हमें। कमाल की गेंदबाजी की उन्होंने। भुवनेश्वर कुमार ने लाजवाब तरीके से 3 विकेट्स निकाले। शीर्ष के 2 बल्लेबाज, उसके बाद नंबर 4 के बल्लेबाज को आउट किया। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, लॉन्ग ऑफ नहीं, इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ बॉल को खेला गया है। 1 रन इस बॉल पर आएगा। कोई भी डॉट बॉल अब तक इस ओवर में नहीं आई है और उसके साथ साथ एक 6 भी आ चुका है, यानी कि ये ओवर अच्छा ही माना जाएगा टीम मुंबई इंडियंस के लिए। तिलक वर्मा का कैच छोड़ा था सुयश शर्मा ने, बहुत आसान सा कैच था और रसिक को विकेट मिल सकती थी, लेकिन सुयश तेजी से आगे दौड़ते चले गए, बॉल उनके हाथ और शरीर के बीच में गिर गई। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, अतिरिक्त उछाल, पीछे जाकर गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेलते हुए हॉरिजॉन्टल बैट के साथ तिलक वर्मा। 1 रन आएगा आखिरी बॉल पर 14 ओवर्स के बाद। 125 रन 4 विकेट के नुकसान पर टीम मुंबई इंडियंस। यह मुकाबला नंबर 54 चल रहा है इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का। ये ऐसा लग रहा है जैसे इंडियन प्रीमियर लीग 2026 कुछ दिनों पहले ही शुरू हुई थी, लेकिन हम लोग मैच नंबर 54 तक आ चुके हैं। पिछला मुकाबला हमने कितना शानदार देखा, उससे पहले हम एक सुपर ओवर ऑलरेडी देख चुके हैं। बहुत ही शानदार मैचेस इस प्रतियोगिता में हुए हैं। अभी वो मुकाबला हुआ था लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के बीच में, वहां पर भी दिल की धड़कनें आखिरी तक काफी ज्यादा बढ़ी हुई रही थी। कह पाना काफी मुश्किल था कौन जीतेगा, और पिछले मुकाबले में भी जहां चेन्नई सुपर किंग्स के सामने लखनऊ थी, ये कह पाना काफी मुश्किल था कि कौन सी टीम जीतेगी। आशु गेमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। बिंदु भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरसीबी विंस, उन्होंने ऐसा लिखा है। स्वप्निल कह रहे हैं मुंबई इंडियंस जीतेगी। एमएक्स मोहित कह रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स जीतेगी। 125 रन बना लिए हैं टीम मुंबई इंडियंस ने 14 ओवर्स के बाद, स्कोर 125 रन। चलिए देखते हैं कि जॉश हेजलवुड आए अब गेंदबाजी करने। 1 ओवर यहां करेंगे और शायद से 1 ओवर रहेगा 18वां 19वां या 20वें में से कोई एक। 15वें ओवर की पहली गेंद, जॉश हेजलवुड ओवर द विकेट से मिडिल स्टंप और लेग स्टंप के बीच में ये बॉल, पैर सामने लाए बॉल के और गेंद को खेल दिया बल्लेबाज तिलक वर्मा ने मिड विकेट के खिलाड़ी की तरफ। कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। इसी तरीके से अगर बैटिंग करती है मुंबई इंडियंस तो इस बैटिंग ट्रैक पर 176 रन बनाएगी और बिल्कुल भी खुश नहीं होगी मुंबई इंडियंस 176 जैसे स्कोर से। खासकर जिस प्रकार की शुरुआत मिली थी आज रोहित शर्मा को, उसको देखकर तो बिल्कुल खुश नहीं होगी टीम मुंबई इंडियंस। बहुत अच्छी तरीके से बॉल पर बैट लगा रहे थे रोहित शर्मा। 10 गेंदों में 22 रन बनाए, डबल 2 और 2 चौके और 2 छक्के भी लगाए उन्होंने। जॉश हेजलवुड हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए तिलक वर्मा के लिए राउंड द स्टंप से इस बार एक स्कूप शॉट लगाने का प्रयास, बड़ी अपील की है जितेश ने, लेकिन जॉश हेजलवुड कहते हुए कि मैंने कुछ नहीं सुना है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास 2 रिव्यूज बाकी हैं। जितेश शर्मा वो कन्विंस नहीं करना चाहते रजत पाटीदार को। रोमारियो शेफर्ड बातचीत कर रहे हैं रजत पाटीदार से, जितेश शर्मा बातचीत कर रहे हैं रजत पाटीदार से। अंत में रजत पाटीदार ने कहा कि रिव्यू लेना उचित नहीं रहेगा। तुरंत अपने खिलाड़ियों के पास पहुंचे थे रजत पाटीदार, लेकिन रजत ने रिव्यू नहीं लिया और ये बॉल एक वाइड बॉल करार दी जाएगी अंपायर के द्वारा। रिफ्लेक्शन आया है, शायद से लगी है गेंद ग्लव पर। अल्ट्रा एज में कंफर्म होगा और अल्ट्रा एज भी हमें थोड़ी देर में दिखाया जाएगा। उससे पहले हम देखेंगे इस ओवर की दूसरी बॉल। एक बार फिर से राउंड द स्टंप से बॉल रूम बनाया तिलक वर्मा ने, बल्लेबाज को फॉलो किया, गेंदबाज ने गेंद को धकेला तिलक वर्मा ने मिड ऑन की तरफ। मिड विकेट के खिलाड़ी बॉल की तरफ दौड़े और उन्होंने गेंद को पकड़ने का प्रयास किया। पकड़ नहीं पाए बॉल को, लेकिन गेंद को इतना स्लो कर दिया था कि 1 ही रन पर रुक जाए तिलक वर्मा और बल्लेबाज विल जैक्स। अल्ट्रा एज, अल्ट्रा एज, अल्ट्रा एज में कुछ नहीं है, यानी कि नॉट आउट ही थे तिलक वर्मा। विराट
the interview question that decides everything. What AI tools do you use? If you say chat GPT, you're done. I'm 51, added AI certified to my LinkedIn last month, got 4 interview requests in 1 week, 1 turned into a job offer. AI certified, like a course? 28-day program, 15 minutes a day, finished it, got the certificate, uploaded it. Recruiters actually mentioned it. What if I've never touched AI before? Perfect. The 28-day AI challenge is built for beginners over 40. You get certified at the end. Week 1, unstoppable. Week 2, proof on your resume. Day 28, you stand out. Tap the screen and start tomorrow. ठीक गेंदों में 8 रन बनाकर खेलते हुए खेलेंगे अपनी पारी की 7वीं गेंद। जॉस हेजलवुड की ये गेंद, ये गेंद गुड लेंथ पर स्टंप लाइन पर बॉल थी, खेला उसको शॉर्ट मिड विकेट की तरफ विल जैक्स ने। गेंद को डीप स्क्वेयर की तरफ मोड़ना चाहते थे विल जैक्स, लेकिन वो करने में उनको कामयाबी मिली नहीं। नहीं मिलेगा कोई भी रन इस बॉल पर। नकल बॉल में आज फंसाते हुए दिखे हमें भुवनेश्वर कुमार रोहित शर्मा को। जबरदस्त गेंद थी जिस पर आउट हुए रोहित शर्मा। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए बल्लेबाजी करने और रोहित शर्मा की तरफ वो गेंद को, विराट कोहली की तरफ वो गेंद को मार बैठे। विराट कोहली लगे थे फर्स्ट स्लिप पर और फर्स्ट स्लिप पर एक जबरदस्त कैच पकड़ा विराट कोहली ने, जिसके साथ सूर्य कुमार यादव की पारी समाप्त हुई। जॉस हेजलवुड की अगली बॉल ओवर द विकेट से सामने रहेंगे बल्लेबाज विल जैक्स। रूम बनाकर गेंद को पॉइंट की तरफ खेला और पॉइंट पर खड़े हुए खिलाड़ी के हाथों से गेंद छिटकी, लेकिन रन लेने का मौका नहीं मिलेगा विल जैक्स और तिलक वर्मा को। सूर्य कुमार यादव के जो डिसमिसल्स रहे हैं इस प्रतियोगिता में वो काफी ज्यादा और बहुत जल्दी जल्दी डिसमिस हुए हैं सूर्य कुमार यादव। बड़ी पारियां नहीं खेल पाए हैं वो। ऐसा लगता है कि शायद से सूर्य कुमार यादव का डाउनफॉल एक बार फिर से शुरू हो गया है। स्पिनर्स के खिलाफ 2 बार आउट हुए हैं सूर्य कुमार यादव टाटा आईपीएल 2026 में, और वहीं पेसर्स के खिलाफ 9 बार। पेसर्स ने परेशान किया है सूर्य कुमार यादव को। अंतिम बॉल ओवर की जॉस हेजलवुड के सामने विल जैक्स। पटकी हुई गेंद, पुल शॉट लगाया गया है, गेंद को खेला गया लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच में। लॉन्ग ऑन कवर खड़े हैं कुरनाल पांड्या, दौड़े अपनी दाईं तरफ, गेंद को बाउंड्री लाइन से पहले रोका। अच्छा एफर्ट, 2 रन आ जाएंगे इस बॉल पर और समाप्ति 15वें ओवर की। 6 रन इस ओवर से आए। 15 ओवर्स के बाद 131 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 30 गेंदें और आखिरी 30 गेंदों में कोशिश रहेगी मुंबई इंडियंस की कम से कम 50 रन बनाने की। 150 तक पहुंचना चाहेगी मुंबई इंडियंस, और खासकर तब जब तिलक वर्मा जैसे एक बल्लेबाज विकेट पर मौजूद हैं। तिलक वर्मा एक सेट बैट्समैन 34 में 44 बनाकर खेल रहे हैं वो। पिछले ओवर से सिर्फ 6 रन आए हैं और ये चीज जरूर थोड़ी सी चिंता बढ़ाएगी टीम मुंबई इंडियंस की। रन्स चाहिए टीम मुंबई इंडियंस को। 6 गेंदों में 6 नहीं चाहिए, एक बॉल में 6 चाहिए, और उसके बाद तो फिर आप सिंगल्स ले लीजिए, डबल्स ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलेगा। 16वें ओवर का खेल हो रहा है शुरू। गेंदबाजी पर आ चुके हैं रोमारियो शेफर्ड। तो समय समय पर इस्तेमाल करते रहते हैं रजत पाटीदार रोमारियो शेफर्ड का। 6वें गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी करते हैं रोमारियो शेफर्ड। ओवर द विकेट से पहली गेंद, सामने रहेंगे बल्लेबाज तिलक वर्मा। राउंड द स्टंप से रोमारियो शेफर्ड अंदर की तरफ ला। रॉकटा धरी बुडू अच्छी गुआरे गोला माऊ 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 आई देखा जाऊं तो एटी एटी एक रॉकटा ताको बड़ा क्लमजी लगती वो आई Ande, Eva, Mama, eh, eh, चला चला उठी चली बा आओ आओ ए माऊ oh oh बेटा oh 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 oh
Mountain. Oh my. ମୋବାଇଲଟା ଧରିବୁ ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିଅଛି ଦେଖୁନୁ ମାଠି ଆସିଲା ଆଉ ବେଟା ଏଇଟା କଣ ଆଗ ପୋଛା ଓ ଆଉ ଧୀରେ ହଁ 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 କଣ ସେଟା କଣ ସେଟା ପାନିଆ ଖାନା 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 ची 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 ପାନିଆ ଖାନା ची 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 ଆଉ ବୁଢୀଟା ए डी हाँ हाँ अरे गला देखो देखो बड़ी बड़ी जी अरे बड़ी जी देखो देखो अरे बड़ी जी माय बड़ी ऐसी बड़ी ऐसी हाँ 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 हाँ
된다. 아, 이게 버제이지? 아, 나 그런데 टाइम करी हाँ तो कौन सा देखा देखा कौन सा होता अच्छी नाली कोई भी तो Oh, oh, बेटा, oh, oh, जी
Madonna. Georgie. Nasi kambing. Pagkilala kita? Ano naman gilalaga? Ilan kita? Foto kita ba sila?
आते हुए बॉल को, गुड लेंथ की गेंद खेल दिया, उस गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन की तरफ बल्लेबाज तिलक वर्मा ने। 1 रन आएगा इस बॉल पर, स्कोर हो जाएगा 132। तो पिछले ओवर में कोई बाउंड्री आई नहीं, देखते हैं कि क्या इस ओवर में कोई बाउंड्री आएगी। इंट्रोवर्ट गर्ल हमारे साथ जुड़ चुकी है, वो 5 ट्रॉफीज के बारे में बता रही है कई दर्शकों को। 5 ट्रॉफीज जीत चुकी है टीम मुंबई इंडियंस, लेकिन आरसीबी उनके नाम सिर्फ 1 है। लेकिन आरसीबी की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत कमाल की है। आरसीबी का ये होम ग्राउंड है, अब एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में अब आपको आरसीबी का कोई मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। रायपुर सेकंड होम है टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का इस संस्करण के लिए। विल जैक्स ऑन स्ट्राइक, रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी पर, बढ़िया गेंदबाजी की है अब तक, 13 गेंदें की हैं और 14 रन दिए। गुडलेंथ की गेंद दबा में खेला है बॉल को, विल जैक्स ने बैट पर सही तरीके से आई नहीं, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी कैच पकड़ेंगे, विकेट मिलेगा रोमारियो शेफर्ड को। अच्छी गेंदबाजी के फलस्वरूप उनको 1 विकेट मिल चुका है। सीधे बल्ले से एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, गेंद लगी बैट के अंदरूनी हिस्से पर, गई हवा में और जैकब बैटल खड़े थे डीप मिड विकेट पर, नहीं करेंगे कोई भी गलती।